शहरों में, तो सबको भी जो है इस सेशन के ज़रिए आज कनेक्ट होने का मौका मिल रहा होगा। सो अगेन वेरी बेसिक थिंग, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है लीन बिजनेस कैनवस। केपीआई की बात हो रही थी, बर्निंग की बात हो रही थी। तो अब क्योंकि मेरे पास तो बैगेज है, तो पिछले 3 साल का एनआईसी का हिरा को मैं 10 साल से जानता हूँ, इनको नहीं पता होगा लेकिन मैं जानता हूँ। तो ऐसे ये भी जानते हैं मुझे, हम फेसबुक पे एक दूसरे की तस्वीरों में नजर आने वाले लोग हैं। तो हिरा जो है शी इज एसोसिएट और हैकाथॉन्स करवाती रही हैं, खासतौर पर जब उस टाइम पे ऑनलाइन चीज़ों को लेकर के जाना बहुत अच्छा स्टूडेंट्स को इंगेज किया था। उनमें से फिर हमारे पास भी स्टार्टअप्स आए, वहाँ से क्लाइमेट लॉन्च पैड का पूरा प्रोग्राम रन कर चुकी हैं, फैकल्टी हैं जेबिस के अंदर। और अभी हमारा रिसेंट एक प्रोग्राम होता है इंडस्ट्रैक लैब के अंदर। तो हम उस दिन हमने कहा था कि आप ट्रेनर क्यों कर रही थी? तो लेकिन एज अ जज एसोसिएटेड रही हैं, जजमेंट करती रही हैं। आप में से कुछ स्टार्टअप्स अगर हैं तो इनकी वजह से हम मौजूद हैं, कुछ स्टार्टअप्स यहाँ नहीं मौजूद है तो इनकी वजह से हैं। इन्होंने कहा ये स्टार्टअप ये कैसा बिजनेस मॉडल है। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा जो प्रोसेस है, हमारा जो आउटकम था आज का वो यही था कि लीन बिजनेस कैनवस, लेकिन ये साथ में प्रोपोजिशन जो कस्टमर प्रोपोजिशन कैनवस आई थिंक सो होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस, वो उस पर भी बात कर रही हूँ कि हम ये बेसिक टूल्स हैं कैसे बना सकते हैं। हमारा मसला यही रहता है कि हमने पैसे कमाने, वो पैसे कमाने के लिए हमें ऑडियंस का पता होना चाहिए, चैनल्स का पता होना चाहिए कि लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे कि वो हमें पैसे दें और हम पैसे कमाएं। और फिर वो डाटा आप हमें देते हैं, फिर हम रिपोर्ट करते हैं, इग्नाइट को बताते हैं। उसको समझना, और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझाती हैं। और सेशन हमारा एटलीस्ट 2 आवर्स का तो प्लान है ना। आप देर तक रोकेंगे तो ये रुक जाएंगी, तो कोई मीटिंग होगी तो वहाँ मना कर देंगी कि मैं एनआईसी में ज़्यादा देर रुकने के लिए तैयार हूँ। और हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि सेशंस हमारे पहले सारे ऑन इन पर्सन होते थे, फैसिलिटी में होते थे, कोविड की वजह से ऑनलाइन करने पड़ गए। और हम उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं भाई लोग टाइम निकाला करें, यहाँ आया करें, प्रॉपर फैसिलिटी का यूज़ किया करें। तो विद दैट नोट हिरा, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप आएँ स्टेज। I just have one question. Am I audible or do I need the mic? I'm audible. ये माइक के साथ मुझे लगता है कि मैं किसी कॉन्सर्ट में गाने आई हूँ, so it's a little irritating. But अस्सलाम वालेकुम everyone. It's good to be here. I think last time आए हुए मुझे 6 महीने हो गए. The last in-person workshop I conducted at NIC was in December, Industech wali. So alhamdulillah that went well. We had some really brilliant startups over there. One question before we start, हमारे online, is there anybody who doesn't speak Urdu? मतलब I can mix up, right? So we had a really great session, और काफ़ी मज़ा आया था यहाँ पर. बड़े इंटरेस्टिंग से स्टार्टअप्स आई गॉट टू मीट. एंड आई गेस आप लोग कोहोर्ट 9 एंड कोहोर्ट 8 की कोई कॉम्बिनेशन स्टार्टअप्स हैं, राइट? सो आइडियली आईड लाइक टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन ऑन हु द स्टार्टअप्स आर, क्या करते हैं. आई डोंट नो जूम पे कितने लोग हैं एंड हाउ पॉसिबल इट वुड बी, बट एटलीस्ट जो यहाँ पर बैठे हैं अगर एक कुछ इंट्रोडक्शन अपना करा सकें क्विकली. तो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. Something like a Chiku. Okay, okay, fair enough. Okay, okay. So, okay, fine. Like Shazam. Okay, fair enough. Okay. And you are, your name? Okay, 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 perfect. आप लोग इनके साथ. जी. Okay, ठीक है, ठीक है, perfect. Um, in future a startup, but you're just here for the session. Okay.
Okay. ठीक है. Um, so mental health, right? Um, your start. Yes. Okay. Yes. Welcome. Okay. 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 ये वो अच्छा सही है. अरे अच्छा आप स्पीडो के साथ हैं. Okay. Okay. So you will have Nestle and Aquafina and everybody on your platform, and then you basically facilitate. Perfect. Okay. Perfect. Thank you. Sir. Okay. Perfect. I think that's about it. So I don't know who all is on Zoom, but so I'm really sorry for missing you guys out. But one thing that I'm glad about is कि यहाँ पर कोई startup ऐसा नहीं है जो करीम का next version launch कर रहा है, which was a huge problem a few cohorts back because everybody was launching the next best version of Kareem. So before we move forward, just a quick question: Lean Canvas यहाँ पर कितने लोगों ने किया हुआ है, experience किया हुआ है, or you know what it is? One person, you two people. Okay. So what my request to you is, if you know something and you can add value to the discussion, please feel free to contribute, especially sharing your live example. किस तरह से आप ये चीजें करी, adapt की, so that other people can learn from you as well, right? So before we go into the lean canvas itself, a quick question: startups fail क्यों होते हैं? अभी Anil was telling you, we were discussing the exact same thing, particularly because I guess airlift का fail होना या बंद होना has hit a lot of people very hard. At least 1,000 people are unemployed, but also people who support the ecosystem are concerned that why, or why are startups failing, right? So any thoughts on that one? कि हमारे वहाँ कोई सच इतनी बड़ी success stories है नहीं to share, right? So जी. Okay. So your point is that how well that idea or solution solves somebody's problem. Okay. Problem solving के point of view से आप कुछ कह रहे थे? Okay. Okay. Yeah. Absolutely. So if I summarize what you're saying कि technology सही develop नहीं कर रहे अपने या अपना, so they're not addressing the consumer need, right? Anybody else who wants to add to that? Okay. सही है. So the capacity to have the documentation or the proper frameworks and models is initially is not there. Models nahi hai. So according to global statistics, the number one reason why startups fail is because there's not market need, not because they're not solving somebody's problem. It's not because they're not spending on the right things or they don't have the frameworks. Essentially, it's no market need.
And when we are talking about no market need, we are saying that customer is not ready to buy from them, right? So आपके people, and like you were just mentioning कि हम market किस तरह से करें, the challenge is not market किस तरह से करें, the challenge is are you marketing to the right person. it it means that exactly that हमारा even as technology startups or technology developers, a very big challenge is that we are in love with our technology, क्योंकि हम लैब में या अपने चार दीवारी में जब उस पर काम कर रहे होते हैं and we it's like raising a baby, right? तो वो आपका बच्चा है, right? तो वो बुरा हो ही नहीं सकता. It doesn't matter वो बाहर जाके किसको चपेट लगा दे और किससे बदतमीजी कर ले, but you love that baby. The same thing with our startup as well, जो भी हमारा product है. The reason that we are not thinking about customers is because our bias or our love for what we are developing, what we are working on, and what happens because of that is that हम customer पे तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसे सर कह रहे हैं market research नहीं कर रहे हैं sufficiently to advise or guide us of what we really need to be doing. So generally startups are failing because market need, मतलब आपने तो बहुत अच्छी चीज़ बनानी, लेकिन अगर आपके पास पेइंग कस्टमर नहीं है, it's not going to run. And in the process of that, you will run out of cash. So whatever cash you've invested yourself, or whatever you've gotten from an investor, or whatever you've been able to raise up otherwise, if you are not selling, if you're not generating your own revenue, you will run out of cash very fast. So that's another major reason for failure. The third reason is that you don't have the right team in place. Right team means the right people. हमारे पास एक बहुत बड़ा challenge ये होता है that either we want to do everything ourselves, or we want to all of a sudden have very large amounts of people in our team कि जितनी बड़ी team हमारी होगी, even if there's no right fit, even if there's no need for that particular person, so we have glorified designations and we want to just have a lot of people around us. So unfortunately, if we don't have the right person for the right job, our business is not going to survive. This is the rule of big businesses, corporates, जो companies 200 साल से ज़्यादा, Procter and Gamble, Unilever, big names, but they've survived more than 200 years. How did they survive? Obviously, they did not run or they did not face these, or even if they did face these, they addressed these concerns in a way that they are able to thrive, whereas a lot of very good high-tech companies, a lot of good products do not survive. So what we want to do, or what does a startup need to do, or what we want to address through these training sessions and these workshops, etc., is दो चीज़ें. एक, time to market, because आप एक Procter and Gamble नहीं है, आप Engro नहीं है, आप बिल्कुल भी 5 साल और $5 million नहीं लगा सकते to try, test, design a product, and then at the end of 5 years say, oh, this doesn't work. So it doesn't matter, let's go back to the drawing board and start with another product. A big company can afford to do that, right? They have money at the back end, जो वो 10-20 साल से काम कर रहे हैं, obviously they've been able to generate. We don't have that kind of luxury. So we need to be, as a startup, जिसको agility जो कहते हैं कि you need to be fast, you need to be agile, you need to adapt to the scenario, but essentially shorten the time. So we don't have 3 years, 2 years to take our product to the market. हमें quickly design करके launch करना है अपना product ताकि time to market कम होता जाए. And the second thing, customer needs हमें again market research, but the customer needs what the customer wants, so we can address not only the product, not only but also the communication जो हम उस customer के साथ कर रहे हैं in line with the customer's need. So 2 main things that we want to do, and in case the market is not responding, obviously be able to pivot before we run out of cash, because that's what's going to make us survive or thrive in the competitive landscape that we're in. So market ko how do we reach the market very fast? What will enable us to start and launch our product? This is what the lean startup methodology is all about. Lean canvas तो बहुत बाद में आया, but अगर हम इस framework या methodology की बात करें, and of course the origins of this is coming from everybody knows Toyota. So the Toyota जी हम lean canvas पे नहीं आए, अभी तो lean philosophy की बात कर रही थी मैं. Eric Ries came up with the lean methodology, but it's adapted from the Toyota business model. कि आप resource efficient हो. आप resource efficient इस तरह से हो कि जब तक आपके पास गाड़ी का order नहीं आता, आप गाड़ी बनाना नहीं शुरू करते. So you don't have finished products and an inventory.
You basically have parts ready and parts not ready. And जब आपके पास गाड़ी का order आता है फिर आप बनाने लगते हैं. So you actually have a customer who will come into your showroom and they will say, I want this car, and you will say, okay, fine, pay us the down payment. आप अपनी commitment करेंगे कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, तो आप उनको, टोयोटा आपको commit करता है कि मैं 3 महीने बाद, 9 महीने बाद, 8 महीने बाद आपकी delivery दूंगा, depending on what their lead time is right now, right? So the lean model is all about being resource efficient. And from this way of doing work, it has now been adapted into a startup methodology, a startup framework, जो कि lean startup कहलाता है. So essentially, what we're doing with this lean startup framework is कि हम time to market shorten कर रहे हैं. Time to market in the sense कि how soon, how quick are we able to develop our product and take it to the market. No frills, no fancy. पहले office setup किया, फिर हमने जो है वो team लाए, फिर हमने जो है वो product बनाया. What we're saying is even that entire philosophy of 2 people in a garage sitting and coding day and night, ताकि हमारा product up and ready हो जाए. It's like Dropbox. Has anybody? How did Dropbox start off? Okay. 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 Y Combinator का किसी ने सुना है यहाँ पे? Yeah, सबने. Everybody aspires to be a Y Combinator. So Dropbox actually got selected for the Y Combinator. And the Y Combinator model basically is कि जब आप अपना cohort खत्म करें, you need to have a ready product that you will launch and you will pitch to investors. And एक requirement है कि हर कोई अपना एक ready product launch करेगा. And at the end of that cohort, Dropbox didn't have a ready product. They still had an idea. So what they did, because they had to launch that product, इन्होंने एक landing page बनाया. उस landing page के ऊपर they put up a sign up link. One YouTube video saying that this is 3 steps how Dropbox works. You create an account, save your files, file transfer or storage जो भी था. नीचे sign up link, are you interested? Overnight, they had about 5,000 signups within one night. People were genuinely interested. That became their proof of concept for their investor as well. And just time to market की हम बात कर रहे हैं. और यहाँ what I've seen startups, yes, you want to, okay, and यहाँ पे what I've seen startups do is this one very potentially good startup investment भी मिल जाती medical ये दवागो model के ऊपर. And despite repeated 5-6 months of back and forth, they ended up spending 2 million rupees on creating the website, creating the app, instead of focusing on जो मेरा उनको मशवरा था कि WhatsApp for business आ गया. If you just need something to get orders, launch it. But their intent was नहीं, जब तक हमारी fool proof website नहीं बनेगी, जब तक हम launch नहीं करेंगे. They never launched. And this is not just them, this is a lot of startups in this space. आप भी जानते होंगे किसी ना किसी को ये पैसे लगा दिए टेक अपनी सही करने में, पैसे खत्म हो गए, but we never came into the market. So our intent with the lean framework or the lean methodology is कि shortest time possible हम किस तरह से अपना product market में launch कर दें. Market means to potential customers. Every time I'm using the word market, I mean potential customers. जो भी possibly मेरे product के लिए पैसे देगा, क्योंकि अगर मैं revenue generate नहीं करूँगी, अगर मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो I'm going to be out of business, right? Then it's just a great tech idea. That was some amazing research. We came up with something fantastic, but it's not worth, if it's not worth the customer's money, it's not worth anybody's money. So what we want to focus on is the customers, and specifically early customers. Early customers, early adopters. Have you guys heard of this terminology? Anybody who can tell me what your early customer or early adopter would be? कौन होते हैं लोग? Young people. Depends on your market segment. So for Dropbox, those 5,000 people who signed up were the early adopters, right? For Tesla, the 20 people who paid in full still waiting for the Tesla to be delivered to them. There are 20 crazy people in this world who paid up front full for a Tesla, like a गाड़ी तैयार नहीं थी, अभी भी it's in process of coming out commercially, right? The early customer वो है कि आप जब आप या
The early customer is the one that when you go and you pitch that first MVP to them. MVP समझते हैं? What is an MVP? What does that practically mean? Change. Your MVP is any product जिसके लिए आपका पहला customer आपको पैसे दे दे. So it means you could improve the features at some point, but even if you have any product that people sign up for, Kickstarter की website visit किए किसी ने, right? On Kickstarter you have somebody crazy saying कि मैं coffee beans waste से जूते बना रहा हूँ, $50 a pair, right? And but I need to have 1,000 confirmed orders, 50 into $1,000 to be able to start making. So if you sign up and pay me my $50, you will be the first 1,000 people to get these shoes. So those are your early adopters. In the case of your particular business, yeah, your particular tech, who would those people be? So you'll have to identify wo early adopters kaun honge. Some of it would come from your segmentation, but generally my target will not be, the innovators are very, so if I'm going to classify them, my innovators are those people who are so much into tech, जो आपके seed investments नहीं होते, जो idea सुन के इतने excited हो जाते हैं कि this is a great idea, I'll put $5,000 into it, or you know, I'll work on this or whatever. या आपने जाके pitch किया किसी को, वहाँ पर somebody got so excited, they said, okay, I'll work on this with you. So we're not talking about those people, we're talking about those people जो उसकी next stage के अंदर, जो आपका product देख के, they'll see your product, they'll pay for it, and then they'll say, okay, this is the feedback on it. Beta testers कह लें आप उनको. Beta tester भी तो sign up करता है ना voluntarily. That okay, fine, but if it's something that needs to be paid for, these are the guys who will pay you for whatever version you're giving them, and then they'll give you feedback, and they'll tell you these things need to be improved. So version 2 could be better in this way, version 1 could be better in this way, so on and so forth. But so you get the difference now. So in your case, I'm not talking about the first 10 people, वो तो innovators हैं, but after the first 10 people are there, the people who will work with you to really help you improve your product, जो आपको pay भी कर देंगे, जो आपको feedback भी देंगे. So identify that particular market segment. Majority obviously जब आपके adopters use कर लेंगे and there is word of mouth and people are, so your early adopters are actually your word of mouth. Word of mouth का concept पता है? What is word of mouth concept? फ्रेंड्स और फैमिलीज के रेफरेंसेस के थ्रू, या फिर आगे क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को रेकमेंड करें. टू विजुअलाइज द वर्ड ऑफ माउथ कॉन्सेप्ट, हैव यू सीन द लायन किंग? लायन किंग देखिए यहाँ पे सबने. तो डू यू रिमेंबर दैट सीन जब सिम्बा पैदा होता है और सारे जानवर वाटरिंग होल पे खड़े होते हैं, राइट? एंड द बर्ड कम्स एंड टेल्स देम दैट सिम्बा इज बॉर्न, एंड उस वाटरिंग होल पे सबको पता लग जाता है, राइट? सो यू नीड टू फाइंड योर अर्ली अडॉप्टर्स आर एट वाटरिंग होल्स जहाँ पर एक जाकर दूसरे से बात करता है एंड देन एवरीबडी फाइंड्स आउट. तो वर्ड ऑफ माउथ वुड बी रेलिवेंट इफ यू डोंट हैव द राइट वाटरिंग होल. इट कुड बी अ मस्जिद, इट कुड बी अ हाई टेक, इट कुड बी अ नेटवर्किंग इवेंट, इट कुड बी एक्सपो दुबई, इट कुड बी व्हाटएवर, बट व्हाट इज़ योर वाटरिंग होल? आपके प्रोडक्ट के यूजर्स कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है? अगर एक स्टार्टअप, one startup that I'm working with in the clean tech, they have these water nozzles, और उनके water nozzles waste, you can put them onto any tap and they reduce water consumption just by making it 80% less or 80% less water wastage generally, right? And for them, how they came to Karachi to do, they based in Lahore, Karachi आए pitch करने के लिए. You know what they figured out? उन्होंने जाकर एक मस्जिद में लगाया as a sample मौलवी साहब को, ये देखें चल रहा है सही नहीं चल रहा है. हफ्ते के बाद जाके बोला आपको फ़ायदा हुआ, जुम्मे के खुतबे में खुतबा दे दें कि पानी बचाना जो है वो सुन्नत है, एंड अगर कोई इंटरेस्टेड है, ये हमारे नोजल्स हैं, हम वो हमसे रब्ता कर लें या आप पेशेमाम साहब से रब्ता कर लें, वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं. नो मार्केटिंग, नो ब्रांडिंग, नॉट सेइंग व्हाट द प्रोडक्ट इज़, बट यू नीड टू फाइंड आउट वेयर योर अर्ली अडॉप्टर्स वुड बी, राइट? अब उस मस्जिद में कौन लोग आ रहे हैं? डिफेंस के वो लोग जिनके घर पानी नहीं आता लाइन के अंदर, they get
वी बॉट टैंकर्स एवरी अदर थर्ड फोर्थ डे आपके अब 8,000 रुपये का हो गया। 8,000 रुपये आपके हर चौथे दिन जाते हैं जी। डिफरेंट होगा थोड़ा सा। योर आपका आईफोन लॉन्च होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव पीपल हु प्री बुक इट एंड से द नेक्स्ट वर्जन इज गोइंग टू लॉन्च। मैंने 6 महीने पहले नाम लिखा लिया, मुझे आईफोन खरीदना है। वो मेरे इनोवेटर्स हैं। आई हैवंट सीन द प्रोडक्ट, आई एम स्टिल विलिंग टू बेट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। माई अर्ली अडॉप्टर्स आर द मिनट इट्स लॉन्च द फर्स्ट फ्यू पीपल हु विल से कि हाँ ये लॉन्च हो गया है प्रोडक्ट, मैं इसमें हु इज़ गोइंग टू बाय इट, राइट। सो योर मेजॉरिटी आर दोज पीपल जो 5-6 महीने के बाद उसको खरीदेंगे कि इट्स लॉन्च्ड, इट्स वर्किंग, देयर आर नो डिफेक्ट्स, इट्स वर्किंग ओके, अब थोड़े से पैसे भी कम हो गए, अब आई विल गो एंड बाय इट। So that's the difference between early majority and early adopters. Does that make sense? And then obviously you have your late majority जो साल के बाद लेंगे कि अच्छा अब नया मॉडल आ गया तो पिछला मॉडल तो बिल्कुल ही यू नो अब कम पैसों पे होगा तो अब आई विल बाय दिस। एंड देन यू हैव योर लैगर्ड्स हु आर गोइंग टू से दैट अब तो आईफोन पे अपग्रेड कर ही लूँ मैं because everybody else is on an iPhone, you know. So that's how this normally works. But yes, for you as a startup, again, the most important criteria is कस्टमर आपका कहाँ पर है, ठीक है, और आप उनको किस तरह से वो पहला द बेसिक MVP व्हाट दे विल पे फॉर। जो वर्जन इन्होंने अभी मस्जिद में लगाया है जाकर, दैट्स वर्जन 3। द फर्स्ट वर्जन इट हैड अगेन देयर वर पीपल हु बॉट इट, कुछ को इन्होंने फ्री दे दिया, कुछ को इन्होंने जो है वो पैसे देकर दिया, बट दे गिव देम फीडबैक ऑन हाउ टू इम्प्रूव इट एंड मोस्टली देयर फीडबैक केम फ्रॉम देयर ओन मदर। वो जब नया ये बनाते हैं अपने घर में नलके के अंदर लगा देते तो उनकी अम्मी खुद बता देती हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। किचन का सिंक जो है ना वो बहुत पेनफुल है, तो मैक्सिमम वाटर लॉस वहाँ से होता है। सो अगेन द आइडिया राइट नाउ इज कि एक एजिलिटी की बात करते हैं। लीन इज़ ऑल अबाउट बीइंग एजाइल, बीइंग फ्लेक्सिबल, बीइंग फास्ट, बीइंग स्विफ्ट, टेकिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग इनटू द मार्केट एंड ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी। कोविड नहीं भी था तो भी देयर वाज अनसर्टेनिटी, टेक कौन अडेप्ट करेगा। कोविड के बाद मजीद अनसर्टेनिटी बढ़ गई है बिकॉज वी नॉट श्योर ऑफ वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग अप। आई थिंक विद द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन एज वेल, एक दिन से दूसरे दिन आपको नहीं पता होता कि यू नो हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस समथिंग इज गोइंग टू बी मेकिंग टू व्हाट यू आर डूइंग। सो हाउ वी स्पोकन अबाउट दिस, बट द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एक्चुअली रिड्यूसेस माई अनसर्टेनिटी। इफ़ आई कीप थिंकिंग कि मैं इसमें ये भी फीचर डाल दूँ, ये भी फीचर डाल दूँ, ये भी फीचर डाल दूँ, फीचर्स तो बहुत डल जाएंगे, बट जो मेरा कस्टमर है, तो मेरा यूज़र है, उसका मसला क्या है। ही वॉन्ट्स टू यूज़ समथिंग दैट्स ईजी। एनीथिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, नो मैटर हाउ गुड टेक्नोलॉजी इट इज़, दैट प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू मेक हिम और हर थिंक दैट आई नीड टू चेंज सम काइंड ऑफ अ बिहेवियर, ठीक है, आई नीड टू चेंज सम काइंड ऑफ अ हैबिट, आई नीड टू अडॉप्ट टू अ न्यू प्रोडक्ट। ही विल नॉट बी कीन ऑन यूजिंग दैट। तो फिर वो जो मेरे 1, 2, 3 अमेजिंग फीचर्स थे वो बेकार हो जाते हैं, इवन दो वो उसकी नीड है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पानी की बोतल, अब नॉर्मल हमारी वाटर बॉटल्स आती हैं विच आर स्पेसिफिक सिलेंड्रिकल शेप, हाथ में पकड़ी जाती हैं आराम से, ठीक है। इफ़ आई वर टू क्रिएट अ टेट्रा पैक का कार्टन, जैसे माइलो का डब्बा होता है या नेस्ले के दूध का डब्बा होता है, एंड आई क्रिएट सम काइंड ऑफ अ मोर एफिशिएंट राउंड शेप्ड कार्टन जिसके अंदर पानी आ सकता है, सस्टेनेबल भी है, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सीइंग बोथ ऑफ दोज एट द सेम प्राइस, विच वन वुड यू रादर पिक? तो वन दैट स्फेरिकल हाथ में आ जाता है। तो टेट्रा पैक वाला डब्बा है, वो पहले आप उसको फाड़ेंगे, कैसे फाड़ेंगे, उसमें अगर नहीं फटा, स्ट्रॉ है नहीं है, 10 चीज़ें, इट्स रिक्वायरिंग एक्सट्रीम बिहेवियर चेंज। देन व्हेन यू ड्रिंक दैट वाटर, उसमें एक टेस्ट भी आता है, बिकॉज गत्ते का अपना एक टेस्ट होता है जो शायद जूस में हमें नहीं पता लगता, बट पानी में फ़ौरन पता लग जाता है। So customer is not very keen on changing his behavior. He's set in his ways. So any fully loaded functionality I give them, my MVP is just doing one trick. जो भी मेरी चीज़ तैयार है मैंने वो दे दी, and the customer is like मेरी ये चीज़ पूरी हो रही है, so I'm paying you money for that, right? So for example, you have a basic website up, जो Airbnb की पहली website थी, because a couple of you are doing the Airbnb model over here. People signed up and said we want to book a room. They didn't put up thousands of listings or fancy photos. उसको पता नहीं अपने किसी फ़ोन के कैमरे से उसने लड़के ने डाल दी थी, because we didn't even have people putting up pictures or signing up to be potential potential hosts. So he used to go personally take their pictures,
and put them up because उनके नहीं time था या नहीं team थी on doing that. So we've spoken about the MVP, but in general, basic set of features. आपका early adopter attract होगा, they will it will meet their preferences and you will get insight on that. और हम MVP को जब टेस्ट करने जा रहे हैं, that's why we use the lean canvas or the lean methodology. So business model canvas पता है आप लोगों को? Are you guys aware of the business model canvas? जो 9 basic blocks वाला है, वो भी नहीं पता. So then I'll just skip that. I will not do the comparison. Just move on to the lean canvas itself. But in general, जो business model canvas है, वो existing businesses के लिए design हुआ है, in how they are marketing or developing their product and services, right? So Ash Maurya, the founder of the Lean Business Canvas, basically adopted this one so that it could be applied to startups. Startups are a different animal. They are not a big business. They don't have the same kind of financials. They don't have the same kind of brand or perception in the market. The most difficult issue or the most challenging point मेरे लिए ये है कि मुझे कोई नहीं जानता. So we will use this canvas to literally create our fast the time to market shorten करने के लिए, customer को समझने के लिए, and the third basically thing is कि जो मेरे metrics हैं, what are my metrics of success? So जो आपकी जिनको आप KPIs कहते हैं, key performance indicators in business, they are now have been contextualized as OKRs, which is basically specific small goals, and I've actually forgotten the word for OKR. मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया. Who knows what OKR means? Okay, I will look it up and come back because I've just slipped my mind. But the idea is कि जो मेरे metrics, जो business metrics थे, उनको मैं किस तरह से startup the objectives and key results, right? Yeah. So I'll double check it because it's just slipping my mind. But the idea, no, KPIs are your big goals, right, for the business. But within the KPIs, आप उसको बहुत specific objectives के ऊपर लेकर जाकर जो आपके OKRs हैं. Yeah. So your long term are your sort of long term are KPIs, but for the short or quick win, we are doing OKRs के महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर हम क्या चीज़ achieve कर रहे हैं in terms of targets. So the metrics are important. Metrics for your business. Is everybody clear what metrics are? यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको metrics नहीं पता है? Because मेरे पास students होते हैं ज़ैबिस्ट में जो एग्जाम में पूछ रहे होते हैं कि metrics का क्या मतलब है. So I just want to double check. There's nothing wrong with it, but just in case I'll explain it. So the lean canvas looks something like this. आमना आपके पास printout आपके पास है? मेरी पास तो ना. हाँ एक मिनट वो अभी मैं बाद में करता हूँ. Just to मुझे आधा दे दें. I'll just give them to them. वो पीछे से भी पास करते हैं. So I'm just waiting for everybody to get like a copy of the canvas. I'm not sure how visible it is on the screen, but it's just in your hand as well. So this is different from the business model canvas. It's an adapted version of the same, but focused towards specific issues and challenges that startups need to resolve. And also because जो हम actual करना चाह रहे हैं, we want to essentially validate कि हमारा MVP जो मार्केट में जाती है. माइक यहाँ पीछे या वहाँ पीछे? वहाँ पीछे आवाज़ नहीं आ रही है. माइक खुला हुआ भी है कि नहीं? Can you hear me now? No. Mic is not working. Hello. 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 Thank you. Is it better now? So much better that now I feel like I can hear myself. Okay. So does everybody have a copy of this? Just for clarity, right? This is adapted from the business model canvas. So people who know or have used the business model canvas, थोड़ी सी similarities हैं, but it is changed sufficiently ताकि it can address challenges that startups face or new ventures that are still not at scale or have grown sufficiently like a large business, right? इसके जो 9 segments हैं, we start working with the one on the right, which is the customer segment. Why do we start working with the customer segment?
बेसिकली आपने अगर आपने टारगेट ऑडियंस अपनी सही डिफाइन कर ली है, मार्केट सेगमेंटेशन सही कर ली, यू हैव रिजॉल्व्ड 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स. आपकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट की कैलकुलेशन आती है वो भी आपकी कस्टमर सेगमेंटेशन से आएगी. टोटल एड्रेसेबल मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं एवरीबडी? हाउ मच ऑफ अ पोटेंशियल मार्केट यू हैव वेयर यू कैन sell your product. So that comes with the customer segments as well. So we start off with the customer segments, who they are. The second section that we go on to is the problem, which is basically somebody over here mentioned कि हम problem solution fit ढूंढ रहे हैं अपना के is this making sense as well, right? So I need to identify what my problem or what the customer's problems are, not my problem. My problem means that I have developed the best tech in the world and nobody has done it better than me. वो उन्हीं नहीं. So with tech startups, see that's the converse. पैसा नहीं कमाना, वो बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, वो एक एस्पिरेशन होती है. जो टेक्निकल बंदा होता है ना, मेकिंग मनी इज कमिंग फ्रॉम, इफ यू आर अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, you could be, it's not like you could be like a tech person and not be business minded, but majority of huh? your profile is non-tech, right? And are you coming from like a business oriented family from the back? So obviously that's very different. लेकिन जो business oriented family से नहीं होते ना, जो average, and tell you the typical profile of this mindset is middle class. अम्मा अब्बा डॉक्टर होंगे या इंजीनियर होंगे, बच्चों को उन्होंने इंजीनियरिंग या मेडिसिन ही पढ़ाई होगी विदाउट एनी ऑप्शंस, बिकॉज बेटा यू हैव टू ग्रो अप एंड स्टार्ट वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड बी अ कॉर्पोरेट स्लेव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. फिर अचानक से बच्चा जो है ना, उसको कहीं पे समझ आ जाती है कि टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज़ है, तो यू नो आई कैन क्रिएट थिंग्स, आई कैन डू थिंग्स, सो दिस इज़ माई कॉलिंग. एंड देन वो फंस जाते हैं कहीं पे टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, बिकॉज बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. So you are in an anomaly profile, but generally, but we're looking at people who are trying to identify customers' problem. The third segment is the unique value proposition, similar to our हमारा customer value proposition क्या है? What are we offering? What are we offering to the customer that will solve that problem for him or her and help determine कि हमारा product market से fit हो रहा है कि नहीं हो रहा. Chotha is our solution. So obviously what we are offering, the solution is what my tech is doing or what my startup is doing. Then the channels of how I will take my tech to the customer. Sixth is the revenue stream. Seventh is the cost structure. Revenue stream, how I am going to be making money. Is it hardware? Is it hardware software? Is this product plus services, product as a service, different revenue models. Cost structures, आपके कहाँ पे खर्चे आएंगे? What could be the possible expenses for you? So just for reference, I think the writing is really tiny on this one, but I'll share the PowerPoint with Amna, and she can circulate it to you guys. So no issues on that. And then the second last thing are the key metrics. अगर metrics नहीं है in place and I don't know what to check and what to account for in my business, then it's just a matter of पैसा आया, पैसा उड़ा दिया, लेकिन कोई measurement नहीं है कि क्या किस चीज़ पे लगाया and what was the return on investment. Return on investment is a very corporatized or capital market kind of a concept, but it holds true. The reason why we have a lot of failures within new ventures and a lot of companies don't even commercialize is because हम अपना return on investment नहीं count कर रहे, what we are getting back from the money we've invested. And then the last thing is the unfair advantage. What is going to set you apart from your competitors or other people in the market, right? So we'll discuss each of these specifically step by step. सबसे पहली बात हमने की थी customers को define करने की, right? So when we're talking about customers, we want to define my specific target segment, which is not everybody, which is specifically that person. शुरू में बात की थी कि lot of startups do come and say कि we are selling and we are doing marketing and हमने सोशल मीडिया पे इतनी एड स्पेंड कर दी है और हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया है, बट nobody is buying our product. But that's probably because you are putting your money in the wrong place. Interesting thing about social media, depending on what your social media spend is and how much and for how long, in general, आप Facebook पे जब advertisement करते हैं तो viewership के पैसे होते हैं. You understand the concept of viewership? What is viewership? किसके? Ad दिखाने के नहीं, देखने के, right? So how many eyes saw your ad? आपकी ad की visibility क्या थी? So that is how you pay for it, right? The cost of men's eyes to view an ad is much less than the cost of a woman's eyes to view that ad. Okay?
So if you're spending, and this is a fact, if you're not spending right on social media, आपकी सारी target market, you could have a woman's product that is coming frequently to men or going to all the wrong audience just because your spend was not enough, right? And this is algorithmic bias or data bias when you're trying to automate a lot of things that happens. But this is something that we need to factor in as well कि जो customer segmentation हम करें वो हमें customer मिलेगा कहाँ पर? And social media is not always the best place to find our customers. Sometimes we need to be looking for them in other places as well. Second thing is that everybody, and then everybody doesn't need my product as well. Okay. Detailed in what context? What I'll do is I can discuss this with you afterwards because I'm thinking somewhere else right now. So I'll have to think in a different direction right now for this. We can definitely do that. The second part is that आपके users or customers different होते हैं. So difference between users and customers, is that clear? Anybody here who does not understand the difference between a user and a customer? Then we spoke about the early adopters, जो कि actual लोग होंगे जो आपका पहला product लेके feedback देंगे आपको actually. अच्छा, users and customers की हम अगर differentiation करें, especially if you're in some kind of a tech product that is going to B2B. B2C relatively simple है, ठीक है? Because you are targeting families and family structure is very simple. The father is going to pay for something everybody else uses, or the adult male member normally pays for everything else, right? So you need to figure out how to, you do need to understand that aapke, in that decision making structure, who is going to be the end user and who will be the buyer. But that is more complicated when you're doing B2B work, because B2B में आपके different departments होते हैं. तो हो सकता है आपका कोई product जो है वो let's say किसी media channel के लिए, so the voice recognition या कौन बात कर रहे थे यहाँ पे उसकी, right? So suppose there's a very significant use for it in the media industry, but the person who will use it, who will be at the technical front, may not be the person who's the decision maker on actually purchasing that. And uski purchase ke liye it has to go through 1, 2, 3 procurement, finance, somebody else. And in all of this time, what it's accounting on you is a lead time. If you intended that I will go and pitch to them and mahine ke baad I'll close the business and I'll get some money, you're probably still stuck at 6 months trying to get them to buy your product. And then when the product comes and goes to the finance team, वो फिर नए सिरे से शुरू होकर कहेंगे कि जी आप कौन हैं और क्यों आए? And you've already been through this cycle, right? So understanding that decision-making unit and understanding how much time it would take, you factor it into your planning and strategy for your pitch. And you factor it in that जब आप इसको pitch करने जा रहे हैं, आपके पास पीछे इतने पैसे होने चाहिए कि आप बर्दाश्त कर सकें उस 6 महीने को. Because if you're not going to be able to survive or sustain those 6 months, it's going to become really complicated for you. So you will have your end user जो कि use करेगा product. You will have the economic buyer who will pay for the product, but you will also have people who are champions जो कि actually जो पैसे देने वाला है उसको जाके encourage करेगा कि आप ये ले लें product. This is a good product. So people who are advocates, so word of mouth की जो हम बात कर रहे थे ना, the people who will be talking about your product at the watering hole, those are the champions. They will endorse your product. Influencers are those people who are in a key decision making. So for example, आपने जाके pitch की किसी company में and then वहाँ पे पता लगा कि once somebody understood your product, उनका कोई रिश्तेदार है वो भी यही काम कर रहे हैं. All of a sudden you are out and किसी और का product in, because you know उन्होंने अपनी based on their position and influence, they've been able to tell the decision maker, the person who has the veto power, these guys are, no, I have a better solution for you at a more economical rate. अपनी कुछ कट लगाकर उन्होंने इस तरह की हरकत कर लेनी है. So we need to understand these dynamics when we are selling, or especially in the tech space, because mostly we would be selling to B2B. We were also talking about not all customers or not selling to everybody. So selling to everyone, अगर आपका product, वो बात वही है कि आपके product अगर very specific digital or in digital tech or in that space, and you were to be pushing it to every single person on earth, it will not sell because the right people will not be seeing it, right? So आपके product पे specific जिन लोगों की need या use है, वो ही उसको खरीदेंगे. जिनकी नई need या use है, वो नहीं खरीदेंगे. So it's a waste of my time, energy and money if I'm going to try and target or try to maximize कि जितने लोगों को मैं, एक concept है ना कि जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा
utna zyada my product will sell. That's not true. If until unless there is a need or an aspiration of a customer to use your product, they are not interested. And then there's something called the China syndrome. So anybody heard about this? So basically what this syndrome says is कि China में जो भी 3 बिलियन लोग हैं दुनिया का आधा population China में, if somebody figures that इन 3 बिलियन लोगों में से हर किसी को टूथब्रश और टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, तो what they think is that अगर मैं इन 3 बिलियन में से 1 लाख को भी बेचना शुरू कर दूं, I will have at the rate of $15 X amount of money every year. And as a startup, what I forget is that even to get those 1 lakh customers, जो वहाँ पे existing companies हैं जिनकी market में cut करने की कोशिश कर रही हूँ, they are more established, they have better distribution, they have better marketing brand perception. I will not be able to compete. So instead of getting those 1 lakh people onto my customer base, I am going to end up burning myself out. Because मेरे पास वो facility ही नहीं है कि मैं वहाँ पर giant के साथ compete कर सकूँ. So the China syndrome is where people think that हम low price करके अपनी छोटे से अगर from this really huge market कुछ लोगों को sell कर देंगे तो we will be in business and all of a sudden people will start buying from us. So and that was I think one reason why a lot of ये ride sharing startups started and failed. Trying to find niche markets like for all female taxis or बच्चों के लिए या van service या whatever, but Careem and other ventures were already established by then. So if you're 3 years late, you're late. It's not going to cut the chase, right? So and then obviously early adopters ki we've already spoken about this, that we need to find the early adopters. So are we okay with the customer? So the issue only is that 2 hours does not give a lot of time to go into everything in detail. वरना ये आराम से 2-3 दिन का पूरा content है, where you go through the entire market segmentation, किस तरह से होती है, किस तरह से हम identify करेंगे, how will we do the market research, how will we do the brainstorming and narrowing down of who my potential customer would be, calculating the TAM and everything. So but as a quick dip, is this okay? Is there anything I need to go back into? कोई सवाल? Okay, good. So if we move on to the second part, problems की हम बात कर रहे थे. Problems, मेरा customer है. So for example, who is your customer? No, who's paying, but who's paying you? Unka specific product I'm asking for your particular product. But Shopify, so no, please. What you're offering is a social listening service. कि जो भी चीज़ हम मैसेजिंग पर या किसी हैशटैग के साथ या जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसको स्कैन करके वर्ड्स, टेक्स्ट और ऑडियो को you will get data out of that and indicate preferences and customer interest on. सही है, बिल्कुल ठीक है. So will Khadi pay you for your service? Is Khadi, right? So why would Khadi want to buy your particular solution? Okay. सही है. So essentially what I want to do is कि one part you're saying, but you said to me कि आपका solution खाड़ी को narrow down करके दे देता है या customer narrow down करके दे देता है, right? But what is खाड़ी's problem? ये तो solution हुआ आपका. Okay. Okay. So now okay. From Khadi's point of view, all they need to do is scan that and the details of the content. Okay. So
But how does that narrow down the customer? हाँ ठीक है. टैग मैच होकर उसको fair enough. So you're then like Google Lens कि आप तस्वीर खींचेंगे and then you are able to. Fair enough, fair enough. Which makes sense. So when you are, and I was using this just as a case example because आपका जो भी कस्टमर है आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इन्होंने बताया कि जी ये करता है कस्टमर नैरो दैट्स अ सोल्यूशन बट उनकी प्रॉब्लम क्या है why would Cardi want to spend or invest on this product if they don't have a problem, if they think everything is fine, if they think that by having multiple people they are giving employment to 20,000 people, they don't want your product because in their mind their impact is significant. मैंने 20,000 लोगों को नौकरी पे लगाया हुआ है, आपका सोल्यूशन आएगा वो 10,000 को आउट कर देगा, so maybe they don't want to invest in it, right? So you need to pinpoint very specifically what Cardi's problem is. Top 3 line problems किस तरह से आप Cardi की identify करेंगे? We use something called a value proposition canvas. जी देखिए उनके पास टाइम नहीं, आपके पास गेमिंग एनएफटी है, अपना सेशन देखिए क्या कर रहे हैं. गेमिंग एनएफटी अपना 100 बच्चे गेम खेल सकते हैं, आपको 100 बच्चे भेजने हैं, उनको अपने एनएफटी ब्लैंड करने हैं, उनकी वीडियो को सिर्फ रोजाना देखना भी है कि वो रिजल्ट ला रहे हैं उसका क्या मतलब आपका आरवाई बन रहा है या नहीं, आपका टारगेट एनएफटी ऑनर, गेमिंग एनएफटी ऑनर. और दूसरा गेम लॉन्चर, गेम लॉन्चर एट द किड्स, कॉलेज किड्स, स्कूल कॉलेज किड्स जो गेम खेलते हैं फ्री में, ठीक है. हम उनको ऐसे गेम पता चले जिसको खेलते हुए थोड़े से पैसे कमा सकते हैं, 8,000 10,000 रुपये महीने, अब तो लगे. तो अब उनको पता नहीं, उनका प्रॉब्लम यह है कि उनको गेम भी पता है, उनको पता चल जाए एनएफटी देना है, इससे कौन लगता है, बहुत ज़्यादा यूज होना करता है. There should be a final criteria that they come up and once sign up once is the easiest possible way. They NFT owners should come to that platform and say right out their NFT to that platform. Okay, so you have a marketplace for NFTs, right? But your marketplace is the solution, right? So very हाँ. Okay, जिनको NFT नहीं मिल रहा उनको NFT. So first of all, are they aware that ये भी कोई चीज़ होती है? Are they actually looking for NFTs? हाँ हाँ. So now the problem is they don't know about it at all. जो चीज So you need to then be thinking about both of these as a problem to the solution that you're offering. ये कि awareness भी आप कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप उनको access भी दे रहे हैं एक तरीके से, right? So आधे दे दें मुझे, बाकी आधे पास ऑन कर दीजिए. Thank you. So I'm just sharing something with you that's called the value proposition canvas. You can just pass this on. So I'm the Has anybody used the value proposition canvas here, Pele? Okay, so this is a really, does everybody have a copy of this? This is a really great tool to identify कि आपके customers की problem या pain point क्या है. And how you do that is you start on with the right side of the canvas, which is your customer profile. And आप अपने customer segment क्योंकि अब तक identify कर चुके हैं, like you said, NFT owners or you said Cardi or whoever. We start off with customer jobs. So I want to list down or brainstorm कि उनको actually करना क्या है, right? करना क्या है से मतलब है कि they need to document the product, they need to put up their product portfolio, they need to have the database of stock inventory management, everything over there. They need to do store layout, display to make sure that the product is visible, put it up on their website. All of these are jobs that Cardi needs to do.
So my first part is identifying कि मेरे customer जो specific segment है, आपके केस में जो NFT owners हैं, उनको क्या क्या करना है, right? What do the NFT owners really have to do or want to do? No, what they want to do, right? Not the pains. जो वो करना चाह रहे हैं. So अगर मैं Uber की मिसाल लूँ, for example, I live in Karachi. My issue is as a commuter, I want to go from point A to point B. Okay, that's what I want to do. But जो मेरे pains हैं, pain point being that there is no mass transit system. There's nothing to support that. I cannot go out, sit in a bus and say कि I am going to point A to point B. ठीक है? But my gain is that यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत easily available हैं और हमारे पास एक ऑप्शन भी है जो कि ऑलरेडी हो रहा है कि आप अपने पड़ोस में किसी को ढूंढते हैं कि भाई आप आधे रास्ते जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाएं आप. एंड जहाँ पे कोई आपसे until unless you offer कोई पैसे मांगे, पीछे बोलेंगे कि पैसे नहीं दिए इसने, बट nobody will ask you, right? वो एक अलग बात है. But nobody asks you that, you know, please contribute. But so I can always get a free ride from somebody in the मोहल्ला कि आप वहाँ तक तो जा रहे हैं, मुझे गली के कोने तक छोड़ दें. So from the customer's profile first, I want to indicate what are the jobs I need to do. मुझे क्या task करने हैं as NFT owner, मेरे pains क्या हैं, मुझे क्या चीज़ इस वक्त तकलीफ दे रही है, gains क्या हैं. Gains would also be अगर वो यहाँ नहीं but किसी तरह से they are being able to already service or already do what they are trying to do. So what, because you will be competing with the gains. अगर वो already कोई चीज़ कर रहे हैं जो उनकी set है और आप कहें नहीं आप वो छोड़ दें, वो करें जो मैं बता रहा हूँ, उनको बहुत तकलीफ होगी. उनको तकलीफ बर्दाश्त नहीं है. हाँ, उसमें हो सकता है तकलीफ हो, बट इंसान की फितरत है कि आई एम सो सेट इन माई वेज दैट नहीं करना मुझे. हाँ, नहीं बिल्कुल. इट्स नॉट ओनली वुमन, इट्स ऑल्सो मैन. ठीक है. माई ब्रदर इज अ केस एग्जाम्पल ऑफ दिस ना. वो सुबह उठ के पहले रिक्शे वाले को फ़ोन करते हैं. ठीक है, वो आएगा तो मैं जाऊंगा उसके साथ, नहीं होगा तो फिर अदर ऑल्टरनेटिव्स. हाँ, वो अदर ऑप्शंस में फिर लिस्ट बनती है. पहले करीम होगा, करीम नहीं मिला तो बाइकिया होगा, बाइकिया नहीं मिला तो इन ड्राइवर कर लूँ मैं, फिर कुछ नहीं मिला तो मैं जाकर बाहर रिक्शा ढूंढूंगा, वो भी नहीं मिला तो फिर मैं करीम की गाड़ी कॉल करूँगा. फिर उसमें भी वो कैटेगरीज आती हैं, राइट? सो but those are also options that he has right now as gains, right? So you are obviously competing with all of them. So if you have identified for yourself the customer profile, based on that, I move on to the left side of this, which is my value proposition. Ji? Current is the customer is currently using something already. उसको कुछ jobs करनी है, ठीक है? और उसकी कुछ मतलब बिकॉज जॉब हो रही है या नहीं हो रही है, ही हैज़ सम तकालीफ एट दिस पॉइंट इन टाइम, राइट? हाँ, बट ही इज़ ऑलरेडी यूजिंग समथिंग दैट इज़ ऑफरिंग हिम समथिंग. So Khadi already has these 20,000 people who are putting in all that data because they have access to low cost labor. हाँ, ठीक है. So that would be his pain, that he has access to some kind of transport through a rickshaw, but that transport is not sufficient for a formal or wedding event or you know वलीमा. क्या आपको बिजनेस मीटिंग में जाना है, आप दोपहर में रिक्शा या बाइक पे बैठ के मीटिंग के लिए नहीं जा सकते. नॉट बिकॉज इट लुक्स बैड, बट इफ़ यू इवन फॉरगॉट दैट चलो कोई मसला नहीं है, लॉट्स ऑफ पीपल डू सेल्स कॉल्स ऑन बाइक्स. गर्मी इतनी है कि आप बाय द टाइम पहुँचेंगे वहाँ पे तैयार होकर, यू नो यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, यू विल बी इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मोड. तो वो वैसे ही आपको डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस पिच यू आर मेकिंग, राइट? So if you're going to meet like a senior person in a company, you can't exactly go looking like that. Yeah. So you could have an alternate, you could also have a customer using something else that is not intended. For example, pen का क्या use है? But any other uses? Have you used a pen in any other way? इस सॉकेट के अंदर प्लग घुसा है, कभी लड़कियों ने बाल बांधे हैं पेन लगा के पीछे, कभी शलवार में कमरबंद डल रहा होता है. ये जिसने पेन बनाया उस बेचारे ने कभी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क होगा जहाँ पे
various uses, right? So your customer in general, again, this is a funny example, but a customer could be using something for a completely inappropriate purpose. I'll give you another example. There's this company that made baking soda in, I think, a US-based company, Arrow and Hammer, या पता नहीं किस तरह का नाम था उनका. उस baking soda को, what they realized was that people figured out कि baking soda से सफाई होती है. उनका baking soda बहुत बिक रहा था. Nobody was using it to bake. वो as a cleaning product इस्तेमाल कर रहे थे. So what they eventually ended up doing was they rebranded themselves. They kept one, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का कलर चेंज नहीं किया. इट वॉज सेम येलो डब्बा, उसके ऊपर पैकेजिंग वेरिएंट्स कर लिए. सो इट वुड से यू कैन बी यूज्ड फॉर बेकिंग एंड मिलियन अदर थिंग्स, कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड मिलियन अदर थिंग्स. तो कस्टमर डिडंट हैव टू रीड कि वो क्या उठा रहे हैं, राइट? उसने जाके वो पीला डब्बा उठाने के एक एरो एंड हैमर का बेकिंग सोडा है, वो अब वो जो भी कर ले उसके साथ. Yeah. The best service is the fact that आपको जो है वो reliability तो करीब में नहीं है. आप खड़े हुए वहाँ पे वेट कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया, वो आ नहीं रहे. Basic thing is reliability, which is why even after all of these apps, the basic customer wants to go back to my own rickshaw wala or the mohalle wala, because so आपका जब solution आएगा ना, when I go to my solution side, I first define what my product or service is. मैं क्या क्या ऑफर कर रहा हूँ, right? पहली बात, gain remove होंगे, but you'll have to add more to that. So your pain reliever part is where you're saying कि मैं ये दुख दर्द उसके हटा दूंगा, कि जो भी उसके मसले हैं. But in the gain creators, what will make your product better than what he's using right now? It could be your competitor, it could be an alternate, because वो पेन जो प्लग के अंदर हम डाल रहे हैं, that's a alternate to a screwdriver, वो जो टेस्टर होता है कि आप वो डालें अंदर एंड वो आपका अर्थिंग हो जाती है. So it's not a competitive product, it's not the same product category, but it's an alternate product. So alternate products also compete. So you need to identify for yourself कि what are the alternate products available. So which is also, so ये value proposition वाला context clear हो गया. The point here is कि मुझे मेरी problems मिल जाएंगी for the customer जो उसने solve करनी है, and will help me develop that solution for them. मुझे मेरा पेन पॉइंट ये है कि commute is not available, ठीक है? तो my pain reliever is that वो रिक्शा को कर देता है, ठीक है? My gain is that मेरा जो alternate to that rickshaw is reliable, right? What will you offer me that will offer me more reliability, that will offer me something more of a connection? So if you cannot compete on that particular connection or that reliability factor, इसके अलावा आप क्या ऑफर करेंगे कि उस जब वो कस्टमर वे आउट करता है ना ऑप्शंस, आप लोगों ने वो, have you gone through any session where they've spoken to you about that marketing funnel? So customer is buying a product, आपने जूते खरीदने, आप पहले जो है वो जूते खरीदने से पहले, and well I don't know how it was done before, but current trend ये है कि आप या पहले 10 तारिक रोड पे शू स्टोर्स हैं, आपने हर स्टोर में जाकर जो है वो जूते देखे, और सारे जूते देखने के बाद 3 आपको पसंद आएंगे, साथ में आपका बेस्ट फ्रेंड या मदर और समबडी इज़ विथ यू, उनसे आप मशवरा करेंगे. तो आपको शायद वो जूता सेकंड या थर्ड हो रहा होगा प्रायोरिटी में, लेकिन मशवरा देने वाले ने अगर कह दिया कि ये बेहतर है तो आप वो ले लेंगे, राइट? जब वो मशवरा आपने कर लिया उसके बाद यू एक्चुअली मेक द परचेज, राइट? सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेयर द इंटरेक्शन, the convincing that customer in that customer journey. How is that person going to pick something up, choose something, decide on it? How is he going to pay for it? आपने वो जूता डिसाइड कर लिया, अब आप जाकर दुकान पे काउंटर पे पे करने गए, वहाँ पर आपके कैश नहीं है 2000 रुपये. The shop doesn't take a credit card or a debit card. That throws you off a bit. You're like अच्छा बाद में आ जाऊँगा, या बाद में फिर आप गए नहीं.
all of these are jobs to be done by the customer. And if there is any gap in any of these jobs, so what you would ideally need to do is map out for every single point of how the customer will find out about your product, how the customer will use your product, what will convince them to buy your product. और हर एलिमेंट के ऊपर आपके क्या क्या पेन पॉइंट्स या गेन्स आ सकते हैं. समथिंग इज हैपनिंग बेटर देन द अदर. समथिंग लाइक इंसान जैज़ कैश भी करता है तो कहता है ईजी पैसा करवा दो, एंड देन यू आस्क देम डू यू हैव एन ईजी पैसा अकाउंट, नहीं जैज़ कैश है, राइट. और यू सेंड समबडी टू द मार्केट एंड से कि वॉशिंग पाउडर ले आओ, वो सर्फ लेकर आएंगे, ट्राई स्टार, एक्सेल, एरियल, एवरीथिंग एक्सेप्ट सर्फ एक्सेल. आपने कहा था सर्फ लाना है, बट आई टोल्ड यू टू गेट सर्फ, एक्चुअल सर्फ, नॉट खुशबू वाला just because it has better खुशबू. But people do that, right? So how would you become the surf or that? Not just by virtue of brand recognition, you need to do something better than the rest. Something that's making your customer. So if I'm looking at what you will do better, one part is जो मेरी तकलीफ है, जो मेरा दुख है, मुझे कपड़े साबुन से नहीं धोने बिकॉज खुशबू नहीं आती है, ठीक है, या उसमें चमक नहीं आती, या उसमें वो ऑलरेडी सॉफ्टनेस नहीं आती है, वो मेरा पेन रिलीव हो गया. गेन क्रिएटर, कैन यू डिलाइट मी समवेयर बेटर? आई कैन डू टॉप लोड, मशीन में डाल लें, हाथ से धो लें, देयर इज़ नो कैप. साबुन की टिक्की को मैं मशीन में नहीं डाल सकती. आई एम नॉट ऑप्टिमाइज्ड. अच्छा, इफ यू नॉट यू हैव डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, उसमें सर्च चेंज नहीं हो रहा, वो पैकेज के ऊपर चेंज हो जाता है कि ये टॉप लोड मशीन के लिए, फ्रंट लोड मशीन के लिए. By saying I have a super app, you can also do money transaction, you can order food, you can, you know, book a bike, you can send a parcel. So डिस्काउंट्स हो गई, ऑप्शंस हो गई, नेविगेशन हो गया, लोकेशन बेस्ड हो गया, हेल्पलाइन सर्विसेज. किसी दिन रिक्शे वाले का मूड ख़राब हो गया और उसने जो है वो बदतमीज़ी कर दिया आपसे, यू कैन नॉट कॉल अप अ हेल्पलाइन एंड से दैट आई गिव मी माई मनी बैक, ही अराइव्ड एट द रॉन्ग लोकेशन. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपके. तो दिस इज एन ऑपोजिट टू दिस, राइट. जो कस्टमर जॉब्स हैं उसके रिस्पॉन्स में आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस आ रही है, ठीक है. जो कस्टमर पेन्स हैं उसके रिस्पॉन्स में पेन रिलीवर जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस देगा, ठीक है. और जो उसके ऑलरेडी ही हैज़ ऑलरेडी सम बेनिफिट्स, राइट. व्हाट मोर कैन यू बेनिफिट हिम विथ योर प्रोडक्ट और सर्विस? कस्टमर ऑलरेडी कुछ कर रहा है, right or wrong, he is already doing something. You are competing not just with what you are selling, but also with what he is using currently. So it doesn't matter. And so you can fix the assumptions, right? So are we okay with the customer problem solution, customer point of view? Say, okay, when I have defined my pain relievers and gain creators, these convert into the value that I'm offering to my customer, right? What is my unique value proposition? मैं उनको क्या offer कर रही हूँ, मैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, मैं उनको ऐसी क्या चीज़ दे रही हूँ जो मेरा ऑल्टरनेट नहीं दे रहा. सो आई नीड टू आर्टिकुलेट दिस इन अ वर्ड, इन अ सेंटेंस, कि वो कस्टमर मुझसे ख़रीदे और किसी और से नहीं, राइट. सो इफ़ देर आर मल्टीपल अदर डेटा सर्विसेज और competitors who offer the same service as you, what are you doing or going to be offering to them that they should select you and not the other ones? So what I need to answer as a question is, why am I different? And why am I worth getting attention? I am not talking about selling. Sales बाद में आएगी. I am talking about getting attention. अगर customer आपको attention ही नहीं देगा, वो जो sales जो सवाल होता है ना कि we are not being able to sell, marketing की sale नहीं हुआ, you didn't get the right attention, right? So हम UVP अपना किस तरह से बनाते हैं? Unique value proposition. We are on the third element of the lean canvas. That's an incorrect claim. It's not possible that you don't have a competitor. A competitor is a competitor. Direct और indirect क्या होता है? पेन स्क्रू ड्राइवर का काम कर रहा है तो क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्या बात है उसमें जी? No, not your unique selling proposition, not something that sets you apart why customers should buy, but what value are you creating for your customer, right? Because आपका the whole context of the business model is you create value for the customer, right? You deliver the value to them in a way, okay, and then you generate value for yourself. So
in revenue streams. So पैसे आएंगे तो it's two-way value. Create for the customer, deliver to them, उनको कैसे पहुंचाया और आपको वैल्यू किस तरह से मिली जो रेवेन्यू जनरेट हुआ. So if we're talking about that value, what the value proposition I'm looking for is something like if I look at resume, ठीक है, आप जब हम वो बात करते हैं ना फीचर्स, बेनिफिट्स, एट्रीब्यूट्स की, ये एक तो फीचर्स क्या होते हैं कि एक चीज़ कैसी दिख रही है, एट्रीब्यूट क्या होता है वो परफॉर्मेंस क्या दे रहा है, बेनिफिट उसको इस्तेमाल करने से कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, राइट. सो इफ़ यू हैव अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस कि हम रिज्यूमे बना के देते हैं, a feature on this would be that we can give you a professional looking template to make your resume, right. फीचर है, आप हमसे काम करवा लें, आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूमे मिल जाएगा. उसको इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या आएगा, आपका रिज्यूमे वुड बी आई कैचिंग, इट स्टैंड्स आउट amongst others that come there. So the feature was the template. The benefit is that you will have something distinct to offer. But as a startup, I want to communicate my story as part of the value proposition. And my story is that if you use my services, I will help you land your dream job. Customer क्या चाह रहे हैं? Customer is looking for that story, that emotional, that experience. So if that good looking, so what if you have a great template? So what if you're going to, segregate me amongst 10,000 people? But what is my hook? I'll land my dream job if you make my resume for me. And then you will say that मैंने 10,000 लोगों का बनाया, उसमें से 9,000 की जॉब लगी. So there is a fail ratio, but you put those numbers, right? वो schools नहीं लिखते कि 90% A result, 90% results, हाँ 90% results क्या होते हैं, 10% fail हुआ ना, या और 90% results में A B C भी होता है. Passing means anything from A to D. ये तो नहीं कह रहे कि हमारे जो है वो डी ग्रेड्स 60 डी ग्रेड्स थे, 40 ए ग्रेड्स थे और बी ग्रेड्स थे और उसको मिलाकर हमारा 90% पासिंग था. बट the aspiration of your customer, that is the proposition that you're trying to deliver. So what you want to, how you want to write this out is कि आप इसमें लिखें जो कस्टमर को एंड रिजल्ट चाहिए, उसके साथ कितने टाइम के अंदर आप वो एक्शन करेंगे, एंड अगेन what is the problem you're trying to solve. Addressing the objections is the problem that you're trying to solve. So ये किसका है, right? हाँ, so this is what Domino says, right? हाँ. You're not talking about what you're earning, you're not talking about how soon they're going to be earning, you're not talking about really what problem is being solved. Earn means कि नुकसान भी हो सकता है, right? So तो थोड़ा सा सोच लें, you can improve that, I'm sure. हाँ, बट नुकसान बट ये होगा ना कि आपने टाइम लगाया लेकिन कुछ कमाया नहीं, ये भी तो हो सकता है. So what yeah, so they have that ना कि अगर नहीं मिला 30 minutes में, आप किसी को ऐड याद है when ZTV used to come, वो परेश रावल गाना गा रहा होता तारा रा कि पिज्जा आया फ्री, तो बाहर बारिश हो रही होती है, what he does is बाहर बारिश होती है and he actually orders a pizza knowing that pizza 30 minutes में नहीं आएगा ना, right? So he actually calls up and he says Domino's, I want pizza, right? So they said okay sir, will be delivered within 30 minutes, and he puts down the phone and he is literally dancing कि तारा रा पिज्जा आया फ्री, because बाहर बारिश इतनी है, 25 मिनट के अंदर बेल बजती है. So obviously that the tagline that 30 minutes or we'll give you free pizza. So I mean it's quite an old ad, so I'm not expecting young people to know about this, but the context being that I'm already committing ना कि मैं क्या offer कर रहा हूँ. So okay, I don't know why इसकी font थोड़ी छोटी हो गई है, but essentially the words that you're picking up, every word you pick up is going to reflect on not only your brand but also how you are perceived SEO ranking के अंदर आप किस तरह से दिखाए जा रहे हैं. So for example, when we talk about, अगर हम तीनों German cars हैं ना, BMW, Audi and Mercedes, right? Performance की बात करते हैं BMW, शशके की बात करते हैं तो Audi, और अगर prestige की बात करें तो I'm really rich, I want to luxury niche, so Mercedes. Porsche is not a German car, I think. Porsche is not German. Manufactured Germany में होती हैं. I don't think Porsche originally is a German brand. French और हाँ फ्रांस की है ना Porsche, हाँ Porsche is French.
about it. It's not, you need to know about your competitors, right? But anyway, आपके स्टेटमेंट के अंदर what who why की जब हम बात कर रहे हैं, what and who तो बहुत easy है बताना कि what आप क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं. So we're talking about addressing their problem or their need. And जितना attractive या जितना clear cut आपकी customer के लिए होगा, आपका value proposition या statement, that is going to help them. Study other good UVPs, try to see what people are doing or how they're writing it and crafting it, ताकि आपको एक concept जो है वो मिल जाए. And then of course there is one, यहाँ पे आप unique value proposition वाला column देखें तो उसमें एक लिखा हुआ है high level concept. So sometimes it also helps to explain to people कि जो हम बात करें जैसे Google Lens for inventory management or YouTube is like a Flickr for videos, right? So if you can, when people know something in the market, it's easy for them to understand what you're talking about. बजाय इसके कि आप उनको समझा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, आप एक analogy pick up कर लें कि this is my closest match, this is what I do, this is what my closest match is in terms of already known products or competitors, right? So we clear up here? Yeah, आपने अपना value proposition craft कर लिया. Now we move on to the and solution develop करने के लिए we follow the Eric Ries philosophy, which is get out of the building. जी जी. अगर MVP की तरफ जाते हैं, हमारा MVP है, but MVP के अंदर CSP भी नहीं है, UVP भी नहीं. हमारी वैल्यू है ना, तो यूनिक नहीं है, तो यूनिक के साथ all MVP है, but when we bring it out, then it comes like too much value. If there is no value and you're saying that your product has no value, means that the customer will also not see any value in it. हाँ. हाँ. I'll take a step back on that. हम जो problem और solution की बात कर रहे थे, my value proposition or unique value proposition will come from my customer pain points and pain relievers and gain creators that I'm offering. जब तक मेरा वो step clear नहीं होगा, so if you don't have this one, that means take a step back and talk that out first. क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई element होगा ना, आप उनको वो होता है 360 degree solutions. You can't start off by 360 degrees. You'll have to probably start off by one. मैं या catering कर रहा था या मैं event logistics कर रहा था, and then I expanded, and now I can offer you everything. हाँ. फ्यूल का खर्चा कौन देगा? फ्यूल का खर्चा कौन देगा? मसला है ना वो मेरा. So I come back to the point that it depends on your customer's need. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा करीम का यूज़ इतना है कि मैं महीने में 30,000 या 35,000 खर्च कर रही हूँ करीम पे, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मैं 46,000 लीज पे गाड़ी ले लूँ. You getting my point? But if somebody is only using it or the cost of transport to them is 10,000, 12,000, something like that, why would they go and take? उनको बहुत कम से कम भी लीज पे गाड़ी मिलेगी. For example, right? हाँ. He was asking. My question was.
ठीक है, मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, मैं क्वेश्चन सिर्फ रिपीट कर देता हूँ. Kind of get it? My question was just कि हम MVP की बात कर रहे थे, तो MVP में मेरा टेक ये था कि हमारे कम से कम MVP के अंदर UVP या नहीं होगा या बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत स्मॉल सा UVP होगा. So that was my point. So just to clarify, he's saying that my MVP will have bare minimum unique value or no unique value at all. I go back to my definition of the MVP. It is that first product or first version that a customer will pay for. If there is no value, the customer will not pay. A minimum viable product is not a prototype. It is something that is in a functional form enough that somebody will pay for it. उसमें गड़बड़ हो सकती है. The customer will give you feedback and improve it, but it's fully functional, addressing at least 1, 2 or 3 of the customer's needs. ठीक है, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट कोई भी है उसमें 3 चीज़ें होंगी. बेसिक फीचर सेट होगा, जैसे फ़ोन है, इट नीड्स टू मेक कॉल्स एंड सेंड एसएमएसेस. ठीक है, फिर उसके मज़ीद थोड़ा सा जो है वो एक होता है क्या कहते हैं उसको, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, राइट. सो जो एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं कि एक तो बेसिक हो गया, फिर एक्सपेक्टेशन आपकी थोड़ी सी होती है जो बेहतर उससे कैटेगरी होती है, वेर यू टॉकिंग अबाउट रंगीन है, वाइट है, ब्लैक है, वेरिएंट है, मॉडल्स हैं. तो सम फीचर्स दैट आर गोइंग टू add value to the customer. So you say, I will buy Samsung and not Oppo because Samsung does this, for example. But then you have a third category where you're talking about delighting, wowing the customer. That can be pushed to later, but your basic needs to be out, right? At least in the market, आप basic feature set तो डालें. आप product design करते हुए खुद ही design कर देते हैं. You say, I'm going to offer these 10 features, and then you pick with your team that in the first instant, मुझे ये basic features ये 2 डालने, delighter ये डालने, और ये एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस वाला ये डालना है, और इन 4 फीचर्स के साथ मैं अपना पहला वो लॉन्च करूंगा, एंड दैट विल बी माय एमवीपी. एंड देन द कस्टमर्स विल गिव यू फीडबैक एंड से दैट जी दिस डिलाइटर इजंट वर्किंग, बट यू कैन ऐड दीज 3 बेसिक फीचर सेट्स एंड योर प्रोडक्ट विल एक्चुअली बी बेटर. सो दैट विल टेस्ट आउट विद द मार्केट एज वेल. But then the product design is going to go into another completely different context. So let's get back to this, because ultimately people want to go as well. So solution की हम बात कर रहे हैं. आपने जो भी solution offer किया है, whatever you're coming up with as a hypothesis that this is my solution, you don't need to get out, go talk to your customers. जैसे market research की बात है. कमरे में बैठ के, अपनी लैब में बैठ के कोई भी product तैयार नहीं होगा. It needs to be tested with, spoken about with 2 customers. उनका feedback, उनका जो भी input या जवाब है, उसको आप अपने product में incorporate करेंगे on something called a build, measure, learn loop. Which is basically the lean startup methodology. कि आपके पास कोई idea है, आप rapidly अपना एक product बनाकर उसको quick testing, take it to your customers. The customer will give you feedback, which will either tell you feature set good, makes sense, keep these features, discard these features, or say that this doesn't make sense at all, get rid of this product. If they say get rid of this product, you pivot and you say, okay, this is not working, what can I do? Do I change my entire product? Do I change my entire business model? Do I change something? Or they say कि these 3 features work perfectly, but ये चीज़ें काम नहीं कर रही, and that's where you go into a persevering phase. You keep what you're doing, you improve it, and you come back into the loop again. But the whole context is it needs to be quick, it needs to be rapid prototyping जैसे होती है, rapid concept development. So design thinking, you guys experience design thinking exercise anytime workshop? So उसमें basic यही होता है ना कि आप customer से बात करें, उनका feedback लें, and then you come up with something and test it with them. So that's a similar concept to this, but in the context of product features. With the design thinking, we're probably trying to work on experience as well for the customers and not so much on the product features itself. So this is the solution bit. Is this clear? Do we need to go into more detail on this? आपका product solution बन गया, then you decide how you're going to take it to the customer. किन channels के through आप लेके जाएंगे, right? So आपके channels जो हैं, 2 किस्म के channels हैं. One, आप अपना product customer को इस तरह से देंगे. Second channel, customer आपसे किस तरह से communicate करेगा. So you will have some kind of, you will have to decide कि आपका channel free होगा या paid होगा. Obviously, free channel means कि you will be limited in number of people you can reach, limited functionality. Paid के अंदर आपको मैंने अभी एक social media का constraint बताया, तो इस तरह के constraints हैं. So I need to decide what my budgets are and how I'm going to manage that, what my pocket is allowing me as a startup, as a business.
Then inbound versus outbound. Inbound are things like blogs, like pull marketing, जहाँ पे customer आपकी website पर आए, landing page पर आए और कोई activity करे या action करे. Outbound is where you are pushing things to the customer, so your SMS alerts, your messages, things that newsletters, जो भी आपके outbound जा रहे हैं. So you have to choose which channels you want to communicate to them on. आप कौन से pick करेंगे? Which one would make more sense to your particular product? These could also mean that you have maybe some more traditional methods. You are not entirely automated. Maybe आपको manual जाकर pitch करके demo देना पड़े. उसके बगैर काम नहीं चल रहा. Then direct versus automated. That will you have more manpower or will you have a more automatic kind of situation? Then direct or indirect. Then a lot of people who want to put everything up on Daraz or Shopify. Sometimes it just makes more sense to have your own sales team and build things up. Start small, start with 2 people, लेकिन अपनी टीम बना के चलाएं. कोई चीज़ सेट हो जाती है फिर आप आ जाएं कि अच्छा मेरे साथ कौन से डिस्ट्रीब्यूटर आ सकते हैं, मेरे साथ और कौन से चैनल्स आ सकते हैं. बट a lot of the times you want to in the first go try to outsource. इसके साथ पार्टनरशिप कर लो, इसके साथ पार्टनरशिप कर लो, हर जगह जो है वो हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए. And then most important thing, retention, right? So referrals work, but if everybody is talking about your product and word of mouth से और लोग आते जाते हैं आपके पास, but you are not being able to develop or retain the customers that you had originally. इसमें पूरी entire discussion on cost of customer acquisition versus lifetime value. So are you aware of those concepts? एक customer को acquire करने के लिए आपको spend करना पड़ता है on marketing, on sales, on making sure the customer comes to you. That's your cost of customer acquisition. इतना अर्सा वो customer आपका customer रहता है 2 साल 3 साल, और उस दौरान के अंदर उसने जितने पैसे आपको दिए हैं, that financial value becomes the lifetime value of that customer. So if, and in mathematical terms, the lifetime value that a customer gives to you should be 3 times that of Coca. तो जो भी आपकी cost of customer acquisition है, उससे 3 times आपको lifetime value customer से मिलनी चाहिए. तो अगर आपको customer acquire करने में $10 लगे, he should at least generate $30 for you. If he is not, you are spending money, you are burning money, and it's not helping your startup or sustain yourself. जी जी. Inbound are blogs and things that would make a customer come to your web page and your Facebook page or whatever. Outbound is where you are doing push communication. Yes, messaging is outbound. SEO is inbound. ब्लॉग आपकी वेबसाइट पर है, कस्टमर को ब्लॉग पे आके इंटरेक्ट करना है. आपका कम्युनिटी ग्रुप इनबाउंड है. आपका ग्रुप है, कस्टमर नीड्स टू कम टू योर पेज, दे नीड टू कम टू योर वेबसाइट टू गिव फीडबैक. जी if part of your marketing strategy is a retail marketing where you need to put up the shop and you need to have that branding and everything to get the customer to come to you, फिर वो आपकी marketing और sales के अंदर add हो जाएगा. But if you can come up with a model that is lean where you don't need to do all of that, then you don't need to include that. No, the office cost is not. We are specifically talking about marketing and sales. Customer acquire करने में with that customer. How much will I have to spend to make sure that that customer walks into my store, he comes onto my website, he orders and he pays me. That customer is not paying you, he is not a customer. And that is wasted money spent that you cannot account for. And if, for example, for whatever you're spending, 50 लोग website पर आए लेकिन सिर्फ 2 ने shopping की है, for example, that entire spend is your cost of customer acquisition. Because 2 people translated, वो 50,000 2 पे divide हो जाएगा, तो आपका cost of customer acquisition 25,000 हो जाएगा, right? But if you in that within 50,000 you are able to generate 100 customers, and your cost of customer acquisition is 50,000 divided by 100. So that's basically what we're trying to say. But आपने 25,000 अगर उसे customer से खर्च किया है, then you need to make sure that he at least returns to you 75,000 rupees. वरना it's doesn't make sense. हर customer पे 25,000 लगाएंगे और उसने return आपको क्या दिया? 20,000 30,000 फिर वो चला गया किसी और के पास. So you are burning out really fast, right? So that's, and which is why this burn model of subsidize the low cost groceries and ये वो, it's not working because आप इतना कम करके दे रहे हो customer को
कि जब वो बढ़ता है, प्राइस बढ़ाते हैं आप अपने आप को कॉम्पनसेट करने के लिए, कस्टमर्स लाइक आई एम नॉट बाइंग फ्रॉम यू, दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? सो शुड वी मूव ऑन? रेवेन्यू स्ट्रीम्स की हम बात करें, सो basic point is your product can only be validated when somebody is going to pay you. So you need to come up with the kind of business model कि आप अपने products या services को किस तरह से price करेंगे, किस तरह से अपने customers को pitch करेंगे कि वो आपसे ख़रीदें. जो price है आपकी वो product का हिस्सा है, right? जो because आपकी जब वो 4 P's of marketing में भी आप आते हैं तो उसमें हमेशा price की बात की जाती है. If you are pricing something at $30,000 for somebody who's earning 500 rupees a day, वो नहीं खरीद सकता. So you need to come up with some model where you say कि चलो लीज कर लो, पहले 5,000 दे दो, फिर उसके बाद तुम थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे देना. तो आपके पे एज यू गो या प्रीपेड कार्ड्स का मॉडल है कि यू डोंट नीड टू पे लाइक 10,000 रुपये का डिपॉजिट एंड देन अनलिमिटेड मिनट्स, बट 50 रुपये का कार्ड डलवा लें आप, जैसे आपका क्रेडिट ख़त्म हो आपने कार्ड डलवा लिया. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट प्राइस यू विल कीप इट एट. जी. You do need to have a threshold कि इससे कम तो आपको it doesn't make sense. If you're going below that threshold, it means you're doing something wrong. And if your customer is every single time saying to you that I cannot afford it, it means he's not the right customer for you. क्योंकि अगर उसकी वाकई नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो कस्टमर पे करता है. फॉर एग्जाम्पल, वाई डज माइक्रो फाइनेंस सेल? माइक्रो फाइनेंस मैं बैंक, नॉर्मल बैंक से लोन लेती हूँ, मुझे 10% पे पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन लूँगी, मुझे वही 40% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा. बट वाई विल इट वर्क? बिकॉज जो वो कस्टमर है, BOP कस्टमर जो माइक्रो फाइनेंस जा रहा है, वो कन्वेंशनल बैंक जा ही नहीं सकता, बिकॉज ही डजंट लुक दैट पार्ट, बिकॉज उसकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है. उसको माइक्रो फाइनेंस बैंक कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर रही है, एंड देन ही एंड्स अप पेइंग अक्रॉस दैट पीरियड ऑफ लोन 3 times more than what he would have paid normally. But he's buying it, right? क्योंकि उस वक्त आपके पास कैश नहीं होता, अच्छा लगता है आपको बैंक ने लोन दे दिया, आपको बेटी की शादी करवानी है, कुछ करना है, नीड है कस्टमर की. So same thing with your whatever your product is, if your customer has a need, and that is where you can identify कि need कितनी है, pain point क्या है जो आप relieve कर रहे हैं. When we're talking about the pain points, the pricing will always happen in accordance with that. And please remember, price आपने set कर दी एक दफ़ा, प्राइस से नीचे आ सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते. तो अगर मार्केट में कभी ये बात निकल गई कि यू आर प्राइसिंग और यू हैव सोल्ड टू वन कस्टमर एट दिस लेवल, जो कस्टमर आपको ज़्यादा दे रहा है वो भी आपको नहीं, यू विल से यू सोल्ड to that one at this price, give it to me at that price as well. That is the threat. The minimum price. Minimum price means आपने अपनी variable and fixed cost सारी निकाल ली, per product आपने pricing कर ली, right? But you're not going to sell at cost. You will put in for your time, effort, energy, and you come up with a price कि my product will cost at least $300, for example. अब आप उसको प्राइस कर दें 500-600 पर. सो इवन इफ यू ऑफर अ डिस्काउंट, यू नो दैट यू विल नॉट गो बिलो $350, बिकॉज आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट 300 है, एंड आपको एटलीस्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ वो. हाँ, व्हाट वाज योर कॉस्ट टू द प्रोडक्ट? No, so what is the basic cost to make one product? $300. ठीक है, आप इस प्राइस पे तो सेल ही नहीं कर सकते, बिकॉज no, she's saying one customer she sold at $300, the other one she sold at $600. Is the same product going to multiple customers, which is fine, but for that, even for minimal, what I'm trying to say is that if your baseline cost is $300 and at cost to cost, right, which means that you need to sell to at least 100 customers to make that total cost जो भी आपका वो प्रोडक्ट बनाने में आपका टाइम लगा होगा, आपकी आपने काउंटिंग कहाँ से शुरू की है, टाइम लगा, ऑफिस रेंटल्स गए, टीम की सैलरीज गई, सारी चीज़ें टोटल होंगी तो आपके पास एक आएगा ना कि माई प्रोडक्ट कॉस्ट $30,000, आई नीड टू सेल टू 100 customers for it to be viable at $300 per customer. Are you getting my point? Right? And if you were selling at 300 to every customer, what money are you going to make? वो तो आपकी कॉस्ट एक्सपेंस ही निकल जाएगा 30,000. Your pricing needs to थोड़ा be worked out in a way
where even at the minimum that you are selling is not what your cut-to-cut cost is. You need to have a little bit of margin on that. But we can discuss more about this in detail if it's not clear. Ji, please do. बिल्कुल 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 so that's your pricing strategy, that is your pricing strategy, but prior to that you need to set the baseline price ना, जो आप कह रहे हैं कि इससे कम तो आप नहीं जाएंगे, अब आपने उसको डिस्काउंट देकर you that made you look really good. जी गाड़ी पे सेल लगती है, कोई शॉपिंग नॉर्मल डेज में नहीं करता और सेल वाले दिन चला जाता है, क्यों? तो ऐसे ही होता है ना. हैव यू एवर सीन लिट खाड़ी में 2000 का सेल पे 2000 का प्रोडक्ट 3000 पे बिकता है. When we are pricing, we do training services and consultancy. When we are pricing a customer, तो हम बहुत साफ लिखकर बोलते हैं कि ये preferential आपके लिए है, ठीक है? And please do not disclose. If somebody else found out the rates we gave you, we will not offer these rates to you again. लेकिन उस rate में भी 30% का margin होता है. I will not ever sell to them at a cost. जी बिल्कुल यहाँ पर आपकी वो रेफरल्स वाली बात आ जाती है ना, वे यू से दैट द कस्टमर कमिट्स टू ब्रिंगिंग 10 कस्टमर्स ऑन बोर्ड, यू से ओके आई विल गिव यू अ बेटर डिस्काउंट, बिकॉज इन एक्सचेंज आपने ऑलरेडी कह दिया ना कि आप वो जैसे ये ट्रांसफरवाइज एंड दीज अदर्स डू दैट गेट 3 people to sign up, you will get 75 pounds of credit. So if you can, then obviously if you commit to getting 3 people who not only 3 people signing up, also using the services, right? So then you get some benefit out of it. But for if there's no benefit attached to you, then you, because pricing आप करके कम प्राइस गिरा सकते हैं. 2000 रुपये से आप 5000 रुपये अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं कर सकते. जब आपकी प्राइस 2000 की हो गई ना, तो पूरे कस्टमर्स के अंदर आपके प्रोडक्ट की ब्रांड परसेप्शन ऑल्सो इज बेस्ड ऑन प्राइसिंग. बिकॉज इफ़ यू हैव 2 bottles ऑफ वाटर और आपका नेस्ले 60 रुपये का बिक रहा है और इवियान 150 का बिक रहा है, व्हाट्स द परसेप्शन? हैं दोनों एक ही चीज़. लाइक इफ़ यू ड्रिंक द वाटर दे टेस्ट द सेम. इट्स नॉट लाइक इवियान ने कोई फ्लेवर डाल के कोई एक्स्ट्रा कुछ डाला हुआ है. जी यू कांट. उसने 150 में बेच दिया, आपने 50 में बेच दिया, यूल ऑलवेज बी द 50 रुपी ऑप्शन. अब आपका प्रोडक्ट बेहतर भी होगा, आप उस सेम कस्टमर को जाके कभी नहीं कह सकते हाँ समथिंग हैपन्स लाइक यू नो कोविड और समथिंग एल्स एंड देन यू से इन्फ्लेशन ये वो वट एवर, बट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से आप इंक्रीज करते हैं. बट जस्ट बिकॉज योर कंपेरेटर सोल्ड एन इन्फीरियर प्रोडक्ट एट अ हायर रेट, यू कांट चेंज योर प्राइसिंग. You're stuck, yeah, pretty much. You're not dumb. It's actually आपने you didn't put enough thought into the pricing modality or the mechanism of what you're doing, right? So revenue की बात again, when you are paid or when your customer pays you, that is also validating that your product or your startup is good enough. So that's what my target needs to be really. I get like a paid something that pays me back. Revenue streams, you have different business models of figuring this out. So again, depending on product, go into details of that. Cost structure की अगर हम बात करें, so मेरी कॉस्ट क्या क्या है? एम आई एंटायरली एंड ऑनलाइन? मुझे अपना वेब पेज बनाने का क्या खर्चा आएगा? मुझे अपनी दुकान चलाने में क्या खर्चा आएगा? मेरा ऐप कितने में बनेगा? मैं इफ़ आई वांट टू डू मार्केट रिसर्च, व्हाट विल इट कॉस्ट मी? दिस इज़ वन कॉस्ट दैट नोबडी पुट्स इन.
अभी I was talking to Andil नीचे कि there's a startup that raised money, and to commemorate that they did an event, very grand event in PC with media and all the glamour and all the big shots in the city. And somebody was saying that इन्होंने तो investment raise करके 1% इस event पे फूंक दिया. That was the word used precisely. The point is that to get more funds, you need to look glamorous. That 1% spend is not at all a bad option. उन्होंने बहुत अच्छा किया, because वो बाकी हर जगह अपने काम की वजह से जाने जाते हैं. They are not फालतू spenders. Unlike those startups, there are a lot of them that raise money, और आपने सीधा जाके शारे फैसल पे 7-8 लाख रुपए का दफ्तर, 150 की टीम, everybody in the team is getting salaries above market rate that are not justifiable because उनकी qualification ही इतनी नहीं होती. Thank you. So, so you need to be very clear in terms of what you are, what your costs are, and then picking and choosing कि आपने किन चीज़ों को priority करके अपनी एक cost करनी है. Sometimes you might need to get actual market research papers because आपके पास access नहीं होगी data की, वो paid आपको जो companies होती हैं या data पड़ा होता है, so you have to utilize those. So you need to account for things that will genuinely help your case or your startup. I know 5-10 minutes रह गए. Second last thing, key metrics. Has anybody seen this pirate funnel, pirate metrics की सुना है किसी ने? Basically for a startup, जो आपकी जो metrics की हम बात करेंगे, आप किस तरह से quantify करेंगे कि business करता है कि जी मेरा return on investment क्या था, मेरी sales कितनी थी, मेरे कितने number of people visited my website, how much money am I burning every month, what is my churn rate, so on and so forth. But you need to identify for yourself certain metrics at 6 stages. First, जब आप अपने product या अपने startup की awareness कर रहे हैं, जब आप customers acquire कर रहे हैं, so when you speak to somebody about your product, they find out about it, is awareness. When they come onto your website and they place an order, that is an acquisition. जब उन्होंने the website, visiting the website is acquisition. And then actually when they pay for your product, that is activation, because you have activated the customer. अब उस customer को activate करने के बाद आपको retain करना है. हाँ, free कुछ भी नहीं होता. हाँ. Your revenue, so you need to figure out what your revenue stream is. हाँ, so that's your revenue stream. Technically, but you need to set your metrics in terms of what you are driving your customer to do. Then we need to go back to the customer journey. And I'm sorry we don't have enough time to discuss all of these things, but customer journey, okay, so in precise words, आप बैंक में जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा आपने खुद खोला कि सिक्योरिटी गार्ड ने खोला, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की अपीयरेंस क्या थी, राइट, वॉज ही प्रिम एंड प्रॉपर, उसने सलाम किया, उसने टेम्परेचर चेक किया, यू वॉक राइट एंड राइट. व्हेन यू गो इनसाइड, आप क्या करते हैं, आप देखते हैं काउंटर पे कौन सा नंबर चल रहा है, फिर आप ढूंढते हैं टोकन वाली मशीन. टोकन वाली मशीन लेफ्ट पे, तो आपने कहा टोकन निकाल लिया, लेफ्ट पे नहीं मिली तो आप परेशान होंगे थोड़ी देर, उसके बाद आप बाहर आएंगे कि ये टोकन मशीन नहीं मिल रही, तो अभी पता नहीं क्या चल रहा है, आई एम गोइंग. और यू कुड हैव अ वेरी नाइस प्रेजेंटेबल यंग मैन और यंग वुमन स्टैंडिंग देयर सेइंग अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, ये टोकन लें आप. दीज आर ऑल touch points on the customer journey, right? And all of these are what are going to attract or retain or make sure that your customer stays with you and not go anywhere else. Ji. North Star metric के बारे में okay, can we take that onto a different session or maybe later? Because I really want to wrap up right now. और फिर मैं किसी और direction में चली जाऊँगी, so I don't want to get there right now. So coming back to this, all of these different steps will have some metrics. कितने customers आए, कितनों ने positive feedback दिया, वो कभी have you seen some of those machines which actually indicate how was your experience today? Smiley face, sad face, red face, very angry. That's also metrics depending on how many pushes on that button. आपके पास daily एक rate आ गई कि what was the behavior of my staff, or this is a feedback call on how your experience was. All of these would be used as your metrics to define, are you doing a good enough job? It's not just आपने कितने product बेचे. कितने product बेचे could also mean that you are spending a lot on getting more customers, because नए customers आते जा रहे हैं, but then your COCA is very high and your lifetime value is very low. So we need to be define for ourselves and then be very clear that हमारी performance किस तरह से match कर रही है. And then the last thing is the unfair advantage. Very quickly, ये वो चीज़ें हैं जी. हाँ.
that means essentially आप कुछ गड़बड़ ऐसी कर रहे हैं, कहीं पे तो स्लिप हो रहा है ना बीच में. कस्टमर क्यों नहीं रह रहा आपके साथ? Was he not satisfied with your product? Was the post sales communication not good enough? Was the follow on not good enough? Right? Or did he not find enough value in your product? तो आपकी product quality के ऊपर भी depend करता है. So there are multiple factors. What you would really need to do is speak to those customers who continue to buy your product, and speak to those customers who have stopped buying from you, and just ask them, why do you buy from me, or why do you not buy from me? कि आपने 2 दफ़ा purchase किया, आप क्यों नहीं खरीद रहे? खुद ही आपको समझ आ जाएगी कि वो क्यों छोड़ के गए. Was your process too complicated? Was it red button, blue button, 3 steps? I can't deal with this. Forget it. You know, or was it something that turned them off? You know, what was it? So you need to figure that out. But that will be multiple reasons. I cannot say कि इस वजह से हुआ होगा या इस वजह से नहीं हुआ होगा. And it depends on what your business or industry is. It could vary accordingly, right? The unfair advantage की हम बात करें, essentially anything that will give me a competitive advantage. If I am in the market as a new startup, something that will lock me in as the leader for at least 2 to 3 years, catch up करेंगे मेरे competitors. People will put money in, people will try to come up. If I launch one food panda, everybody wants to launch a food panda. Oh, delivery OA and eat OA and whatever else. They will launch. Kareem Cake Parallels will launch. But what is Kareem doing different that the others don't get a chance, or they're not able to come to that level? And it's not just about the money that they're putting in. Ji. Not necessarily first movers, ठीक है, but आप इसको एज अ पैरेलल ये इन्विजन करें कि आप अगर किसी किले में रहते हैं और आपके किले का एक टावर है जिसके अंदर सोना है, राइट, एंड यू पुट अप योर डिफेंसेस टू मेक श्योर दैट गोल्ड स्टेज विथ यू. वो आपके डिफेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, दे विल फॉल डाउन वन डे. लेकिन वो 3 साल जो आपको लास्ट करेंगे ना, दैट इज़ योर अनफेयर एडवांटेज. 3 साल तक आपके सोने को कोई ले नहीं सकता. Whether it's that moat or whether it's that bridge or whether it's whatever, if you get the analogy that I'm talking about. पुराने ज़माने में आपने देखा किले होते थे, उसके बाहर पानी जो होता था उसमें फिर एलिगेटर्स भी होते थे. एंड वो which movie I saw this thing, उसके ऊपर anyway वो you have these different war strategies where you have people coming up with unique ideas to overthrow that, you know, kingdom आपने वो करना है, take over करना है. But the idea is that you are not going to be invincible, but at least something that sets you ahead of the game for 2 or 3 years. कि आपका competitor आपसे catch up करेगा eventually, but not like आप आए और foreign launch हो गए, and because they were bigger and better in some way, they were able to get you out of the game and take over everything. Because अगर आप एक agri based startup हैं और आपने all of a sudden bio based seeds करने शुरू कर दिए that don't require chemical fertilizer, that require less water consumption, Engro foreign खड़ा हो जाएगा. Engro doesn't want you to do business. They want to sell the fertilizer, right? So they will do everything to kill you out. So you need to have something that will set you apart. What is it? A patent, an IP. For most tech startups, if you don't have that patent and IP, you are washed out in a day. There are at least 2 or 3 startups I know जो commercially business करते ही नहीं है, product ready है, they don't have the funds to get the patent, and they know the day they launch, if they launched without that patent, वो 2 minute में Engro or any other competitor would get them out of the market just like that. So whether you're locking in something with your suppliers, whether you're hiring an engineer from NASA that, you know, nobody else has in Pakistan, but something that will help you stay ahead of that game for the next 2 or 3 years. And then of course you have fair play, competitors आएंगे, market evolve होगी, customer base बढ़ेगा, obviously things happen and, you know, the dynamics change. So that's the unfair advantage. Just the last thing here, as a startup, you will be facing 3 kinds of risks. One would be your product risk. आपका product सही है कि नहीं है. Customer risk, are you being able to reach out to the customers or creating that right path for them or not? And the third is market risk. Viable business बनेगा कि नहीं बनेगा. So yes, market risk के एक दिन dollar rate change हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें change हो जाती हैं आपके लिए, right? I remember somebody was trying to make an electric vehicle or something like that locally. एक part China से मंगाना था. All of a sudden dollar rate changes, the part goes up from $8,000 to $12,000. It throws apart your accounting completely, right? You haven't factored in those 8 lakh, 10 lakh रुपए का differential. I mean, $4,000 is not a big amount, but 8 lakh रुपए is a very big amount. So you know that is a market risk. But आपका objective, आप कितना जल्दी customers को पहुंच सकते हैं, जिन customers की basis पे आप अपना business build करेंगे. The first
focus would always be problem क्या solve कर रहे हैं आप, and that's where your start should be. That's where you need to come. फिर channels क्या हैं आपके, revenue streams किस तरह से. Technical is almost always the last, and this is statistical data. So all startups that have spent their 3 years, 5 years perfecting their technologies, by the time technology perfect होती है 5 और market में launch हो चुके होते हैं उस तरह के. So that's something that, again, as startups or founders, I think the bottom line or the one take-home message is that be rapid, be fast, launch your products quickly, and find that first customer who's going to pay for what you're offering, and the customer that will give you feedback. One example on this is there is a startup that I'm working with. उन लोगों ने Shell को pitch किया एक product. Basically, they went through a competition, Shell था अमेरिका, and they won a prize over there. And so what they did was they pitched the product to Shell, and they said that आप हमें 2 के पैसे दे दें, हम आपके 2 sites के ऊपर ये हम लगा देंगे product. If it actually proves our point and what we are saying, this machine will do, then you will take 500 or total of 500, so 498 more sites from us. And Shell agreed to that. And sure, what did Shell do? Shell took 2 whole years to proof of concept and vet it out कि चल रहा है नहीं चल रहा है, ये दें report जमा कराएं, इसको pitch करें, उसको pitch करें. But when they saw it was working, they've given them Shell ने भी उनको foreign से नहीं दिए बाकी 498. They've given them the next 10. And now they're going to phase it out and give them whatever. But the point is, that's the testing that we're talking about. Find that one customer, and obviously they improved in the 2 years that Shell has been testing their product. They've improved that version. They've launched version 2 and 3, depending on other features and for other customer segments that have come out of their experience with the Shell site. And that's what we're expecting you as startups be doing or working on. So yeah, from my side, that's it. And if there are any questions, or Amna has, बहुत हो गया, Amna's like बस घर जाएं. So if there are any questions, I'm happy to take them, or if you want to connect later on, that's also fine. We can discuss बाद में अगर कोई ऐसी चीज़ है. जी जी. और हम तो अगर एरिया का एग्जांपल से देखें कि व्हेन इनटू द टेक्नोलॉजी कोविड हो रहा था एंड एवरीबॉडी वाज हेल्पिंग ऑन देयर, लेकिन अब जो है इसे कोविड खत्म हो गया है एंड बोर्डर ओपन अप, तो लोगों का जो बिहेवियर है पाकिस्तान से, मैनी ऑफ देम हैव गॉन बैक टू शॉपिंग इन द स्टोर. When COVID was happening, despite Airlift being there and Foodpanda offering groceries and Careem offering groceries, my most reliable grocery delivery was my corner store. भाई मुझे ये चीज़ ला दो, आधे घंटे से मतलब 5-10 मिनट में वो चीज़ मुझे ला देगा. Airlift पे ऑर्डर देना कितना बड़ा अज़ाब था. First I will go, I will download the app, I will create an account, then I will select what I want to select, then it says this is not available, and then my basket goes out of the window. Airlift app was a genuine problem. I did not like that. The app was not user friendly. If anybody has used it, at least I didn't find it user friendly. Careem, I have my mother's using Careem. She uses it fine. She couldn't use Airlift, the app. So one problem was the product, but a bigger problem for them that was not कि COVID की वजह से वो चल रहे थे और COVID के बाद वो नहीं चल रहे थे. वो चल इसलिए रहे थे, and all burn models are following this essentially. आपके पास 2 customers हैं. एक आपके किराना स्टोर्स वाले जिनको आप कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हारी मार्केटिंग कर रहा हूँ. एक आपका कस्टमर है जिसको आप कह रहे हैं मैं आपके घर पे आपका सामान ला के दे रहा हूँ, राइट. अब आपने जो आम प्रोडक्ट मार्केट के अंदर 50 रुपए का है, उसको शुरू में आपने 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ पे प्राइस करना शुरू किया. सो यू आर टेकिंग द ब्रंट. आई एम पेइंग लेस, बट यू आर पेइंग द स्टोर वाला इन फुल, राइट. सो यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग मोर टू मेक श्योर दैट आई सेल. And in COVID that was great because COVID के टाइम पे everything was, मेरा ग्रोसरी वाला भी ऑनलाइन ला के दे रहा है, आधे घंटे के बजाय मैं 1 घंटे में आ जाएगी ग्रोसरी, तो चलो I let me go there because I'm getting a better rate. You are talking about replenishment products, right. ये कनौर के नूडल्स, पानी, ये कोई इनोवेट नहीं होंगे, ये प्रोडक्ट सिर्फ रिप्लेनिशमेंट के अंदर आते हैं. वे खत्म होगा, स्टॉक रिफिल हो जाएगा. तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे 40 का प्रोडक्ट 30 में मिल रहा है. एंड देन व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, Airlift started running out of money. They cannot subsidize my product anymore. To compensate for that, all overnight, वो 40 रुपए का प्रोडक्ट 80 पे बेच रहे थे.
and please tell me if I'm wrong, I saw some ridiculously priced products over there, really ridiculously priced, जिसको देखकर भी मुझे होता था कि यार ये how are they selling this? When they started doing that, automatically your customer is going to say, sorry, why? And one reason why I have stopped ordering from Food Panda is because of that. ये आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में 800 रुपए का है, आया आप मेरे घर हर हफ्ते मीरठ कबाब आता है संडे को, फूड पैंडा पे इट कॉस्ट्स 1200 रुपीज फॉर अ प्लेट दैट एक्चुअली कॉस्ट 700 रुपीज ऑफ कबाब, 500 रुपी डिफरेंस. उसमें मैं काउंट करती हूँ कि इतनी देर में तो मैं गाड़ी निकाल के लेकर भी आऊँ या बाइकिया भी बुला लूँ तो वो मुझसे 100 रुपये ज़्यादा लेगा. So that's the differential. So I don't think that, हाँ 200 वो मिनट मेरे घर से बहुत करीब है और पे 1 लीटर भी नहीं लगता, इसलिए मैं that was my cost. नहीं वो it's actually walking distance ना, तो वो इसलिए मैं walk भी करके जा सकती हूँ, but I'm just being lazy, so I'm not going to walk. I will take my car and go. But the point is, it's not as simple, and I'm pretty sure for a business to shut has really got nothing to do with COVID. May business boomed, not for airlift. For me, I do services and training and consulting. My business boomed. I've probably earned 5 times more in 2021 that I earned in 2020. Plain and simple. 2022 it went down because people were back to normal, but it didn't affect me still that much. Prices change ho gayi. I'm still hitting more than I hit in 2020, for example. It's not like I went bilkul bust. But why would a business shut? Customer नहीं था, customer था भी. आप if you get the exact numbers, मैंने किसी से पूछा था, बहुत नाराज हो गए थे, साहब मुझे numbers नहीं बता रहे. But if I read somewhere, their spend, so airlift specifically, their spend per month was about 8 lakh rupees. The revenue they were generating was 3 lakh रुपए. When I'm saying revenue, उसमें से मेरे expenses भी नहीं गए. If I'm already earning 5 lakhs less than what I'm spending, फिर उसमें से मैं बाकी, how am I going to survive? So there are multiple issues with this blitz scaling model. उसके लिए आपको blitz scaling ecosystem भी बनाना पड़ता है. हमारा ecosystem नहीं तैयार है अभी इसके लिए. We're a little bit nascent. We still get there in a way. But anyway, that's my take on airlift. But you can have a different opinion, and other people have different opinions. Any other questions? जी. हाँ. हाँ. Yeah, and that's why I like Chiku, because half the places that don't deliver on Food Panda, वो Chiku पे आ जाते हैं. So I mean that works fine for me, because I don't want to pick up the phone and call. I am very happy, two clicks and the food is in your cart and you're ordering it. For 5 minutes, we can have it, but can I request you to line it up on some other day, or we can do it over a call if you're okay with that? We can do a Zoom call also, but we can do the 5-minute session. Don't worry about that. 5 minutes से ज़्यादा भी कर सकते हैं, but right now I just realized I'm going through a brain fried mode. So if you can excuse me for right now, but we will line it up. Any other questions or comments? Please do give Amna feedback, and if there's any areas of improvement, please tell her, ताकि वो confidentially मुझे बता दें कि आपने ये सही किया था, ये सही नहीं किया था. So for me, it's a learning point every single time, and I'm sorry you felt left out. Generally, I try not to, but I'll tell you what my pain point today was. आमना AC नहीं चला है पूरा 2 घंटे यहाँ पे I was standing. इधर आकर आप हवा खाएं, थोड़ी सी आपको समझ आएगी. ठंडे कमरे में करवा दें, उन बेचारों का क्या कसूर है. I'm glad you have. You're welcome. You're welcome. There's tea downstairs, and ये तो important बात है, तो mic पे करें. There's tea downstairs, and you please fill the feedback form. Thank you for being here. And sorry for the AC. Sure.